Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. VMware VSphere Batch 1 lecture number 5 last session number 3 of this week is started now. Let's wait 2 minutes for the other participants, then we will start our session. So let me show my screen. So this is stopwatch which is now on. We are waiting for the other participants for just 2 minutes. After 2 minutes, we will start our session. So let's wait. Hope you all will be okay. Before starting the new session, we will revise some of our previous lecture and then we will continue. So let's wait 1 minute 15 seconds for other participants. 1 minute 15 seconds. Time is running fastly and we are waiting for others. Hope they will join immediately because we have sent the link in all over the groups. And please keep your mic on the mute. Only 1 minute left to wait for others. This is batch number 1 of VMware vSphere server and data center virtualization. This is the session 3 of the first week, last session of this week. After this session, you all should take a break of 4 days, and after 4 days on Friday, in next week, coming week, on the Friday, we will meet in session number 4. So this is the last session of the first week of this batch 1 VMware vSphere server and data center virtualization. So only 20 seconds left to wait for other participants. So let's wait. Because this is the right of other participants that we should wait for some duration of time for others. Because they can have some problems of internet issue, etc. So our time is now finished. It's about 2 minutes. So members, if you are watching this recorded session 3, then you can see that we have waited for you to join the live session, but you haven't joined. So now we are going to start the session now. So let's start now. But before starting, let me announce the result of assignment 2 submission. Then we will proceed further. So let me check who has submitted assignment number 2. So Iftikharuddin have no submission of assignment 2, Mohit have no submission of assignment 2, and Zenith have no submission of assignment 2, and no other member as well. So let's move and announce the result of assignment 2. Assignment 2 haven't submitted by any member. So this is the result that we can't announce result because any member in this all over the group which have 90 plus member, no one has submitted their assignment 2. It means no one is serious. So you can't learn until and unless you are not serious. So be serious, okay? So assignment 2 haven't submitted by any member. That's why we can't announce position. And let me give the message to the members. Join fastly. Let me send the link again so that they can join. So members, if you are watching this report in front of the live members, and if you are watching the recorded session 3, you can see we have waited for you. We have sent the link for you in different groups as well, but you haven't participated, so it's now your responsibility. So you will not avail the vouchers of SAIL international certifications if your performance is null like this. No one has submitted assignment number 2. No one is joining the session regularly.
So you can't avail the feature of international sales certification. Only those members will avail who will take class regularly, who will submit assignment regularly. So this is the condition for availing those certifications. So when I will announce the certifications vouchers, so I will not record this session and I will not upload. So remember, you can't avail this feature if you are like this. Okay. So let's continue. We members Atif Mohammed, we members Mohammed Idris Khan, we members Mohan Chanu, we member Regional Moyo. So this is the second session of Regional Moyo. Let's ask for Regional Moyo why you were absent yesterday session. We welcome Ahmed Hello, Imtiaz sir. Sorry. from Yes. Pakistan. Come again. Yes, yes. I was saying yesterday I had to attend a family funeral yesterday. There was one member in our family that passed away, and the burial was today in the morning. So hence I couldn't attend the session for yesterday. But I hope you will attend the sessions regularly in future. Yes, most definitely, sir. Okay. And also, I hope you will recover the previous lectures which I have sent in the group as well and in your personal chat as well. Okay. Yes, sir. So let's go to the Muhammad Idris Khan. So this is the first session of Muhammad Idris Khan. Muhammad Idris Khan, why you haven't attended the previous two sessions? Why? No response from Muhammad Idris Khan. Atif Muhammad, why you were absent yesterday? Because I emailed yesterday, so that's why I cannot attend the class. Okay, hope you will take classes regularly in future. Okay. Okay, sir. So, Mohit congratulations, you are the member who have attended the I sessions regularly, but disappointed from your performance that you haven't submitted assignment number two, which are the two portions of theoretical plus practical. So this was the disappointment from you. Hope you will recover it. या फिर कल मैं श्योर कर दूंगा। आज मेरे पास लैपटॉप नहीं था, इस वजह पे थोड़ा सा मैं काम वो असाइनमेंट नहीं लिख पाया और वो प्रोजेक्ट नहीं बना पाया। Okay, so I'm continuing the lecture. If someone come in या the let's waiting continue. in the waiting room, then please inform me that someone is in waiting room. Admit them. Okay, I will admit. So HUOIT, welcome and tell us that why you were absent in the previous two lectures. Okay, you're not responding, so let's continue the lecture. So लेट्स कंटिन्यू क्योंकि वक्त जाया हो रहा है। it may access my server from AWS data center, both by VMware for me and for all public users who can access it freely. So let me access my server in a while, then we will continue our lecture. So I think my server is accessed finally. So let me go through my server, okay? Yes, it's now going to be accessible by me. But let me revise the previous session little bit work. So lecture 13 VMware vSphere. The hypervisor enables you to install multiple operating systems and applications on a single server. What does it mean? It means that, for example, you have hardware, okay? So if you install the hypervisor software on the top of hardware, so hypervisor enables you to install multiple operating systems. So hypervisor, through hypervisor, you can create VMs
on VM you can create multiple operating systems and applications, and you can create multiple applications on the OS operating system. So this is possible through a single server. So this is the benefit of virtualization in comparison to on-premises solution. That in on-premises solution, if you need 5 machines, so you should go to market and buy 5 machines. But in virtualization, you should buy one hardware and you should create 5 VMs through hypervisor, and then you can access the demand which you have demanded. Like you said, I need 5 machines. So in virtualization, you have also accessed 5 machines, and in on-premises, you have also accessed 5 machines. But the comparison is that virtualization is less costly than on-premises, and HCI like human-computer interaction. So this is the best solution virtualization, because virtualization doesn't provide the benefits for the environment, but on-premises provides the benefits on the environment. Why? Because if you buy 5 hardwares, so it produces heat, it consumes the light, it consumes the many resources, many power management. But in virtualization, you buy one hardware, which produces less heat than 4 hardwares or 5 hardwares. So that's why virtualization doesn't give too much benefit on the environment. So virtualization is much better than the on-premises solution. So let me check that is someone waiting in the waiting room or not. So no one is waiting in the waiting room. So let's continue. So my service is finally accessed. Hope you I have watched the recorded sessions. If you haven't watched, I hope you will watch in future. और आपने आज तो बताया था कि AWS ने इसको जो फ्री भी एक्सेस था उसको डिनाई कर दिया VMware का। Actually, talk in English because there is a participant who don't understand the questions if you will ask in the Hindi or Urdu. You told me that AWS free virtual machine deny. So, Mr. Safaruddin have joined the session. Mr. Safaruddin, welcome. You are the regular member. We appreciate you, but the main thing which I am disappointed from you that you haven't submitted the 2 assignments continuously. So hope you will submit assignments in future. So this will improve your performance in the VSphere course. So welcome, Mr. Khardin. Let's continue the lecture. So let me give the answer to the Mohit Shanu. So he asked about the announcement from VMware. So let me give the Yeah. explanation of that. So let me go to the point, go through the points, go to the restrictions which are announced by the VMware company, and make you understand on those points. So Reginald Mayo, are you understanding or not? I do understand, sir. Good, good, very good, very good. Good response from you. Thank you so much. You're welcome, sir. So here's the message. नीचे है तो Yes. ये Now let me give the lecture on this. VMware have restricted their AWS hardware server users from each activity which they were performed on their personal use. It means that VMware have prohibited us to use a server for these things. Like from today, we will not be able to due to this announcement to use our free servers for these uses. So this server is accessible by me for free. So that's why here's a restriction from VMware that if you want to use these services, you will follow pay-as-you-go model. Like we should go to AWS dashboard and we should pay, and then according to pay-as-you-go model, we can accessing these servers. But due to these free servers, VMware have restricted us, prohibited us that you can't access this feature. First feature.
no access of any website on any browser. So it's mean that if you go to, let me do a lab on this point, you will understand that what is the restriction. Like for example, I'm going to my web browsing. After going to my web browser, I want to go to YouTube. So now look at this. I can't access any website. I can't download any desktop application. I cannot perform any activity. This is now restricted by VMware. Okay. Another, can't perform lab which we want. It means that for example, I want, like for example, this is my dashboard. I want to access this. You all should be clear on this point, okay? Which I'm going to make you understand. Look at this. This is my dashboard of vSphere. For example, I want to create VM. So I can't because VMware have restricted us that if you are in slide 1, so you should follow slide 1. If you are in slide 6, you should follow slide 6. If creating VM slide haven't come, you can't create the lab in advance. So this is the restriction from VMware. Like I can prove it now. Look at this. New virtual machine. I want to create virtual machine. Now if I click on create a virtual machine, I have no option to proceed further. No next button. So that's why it is not possible. It will be possible when the lab will come. So we will go through the slides. So in the slides instructions, we will follow the labs. Before slides, we cannot do any kind of lab. This is the restriction from VMware. Now the third restriction, we can perform lab according to our official course content flow slides. It means that this is the course content, official. If you will follow like this, so for example, this is slide 1. If VMware will tell you that create a VM in this slide 1, for example, so you can create. If VMware will talk about something else in slide 1 and you want to create VM, so you can't because this lab haven't come. It will, we can perform the lab according to the slides, according to the official course content, according to the this course content. Okay. Now the fourth restriction you can see. Our lab cannot be started from where we left. It means that, for example, in session 3 today, we perform 100 labs. For example, if we perform 100 slides and according to 100 slides, we perform 10 labs, for example. So, for example, in session 4, we want to continue from the 100 number slide and we want to continue from 11 labs. So it is not possible. We have restricted us that you should start the labs from the scratch, from the beginning. Then you can jump to the 100 slide lab. You तो can हम लोग continue. सर तो हम लोग लाइव कैसे करेंगे सर So अगर ये चीजें रहेंगी तो try to speak in English because I have already told you there is a participant who can't understand. सर एक बंदे के लिए सबको आप इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, दिक्कत होगी हम लोगों को फिर समझने में Actually, there are a lot of people in the session, in the panel, who understand English very easily. So this is not the old days that we cannot understand English. This is the modern days. Everyone understand English very well. Okay. So if you can ask from any member, if they will deny that they don't understand, then I will continue in Hindi or Urdu. But I understand English easily. It is not a big challenge for all of you. You can speak and you can understand. There's no one who cannot understand, I think. If there is anyone in the panel, he can tell me, I will continue in Hindi Urdu. But we should also take care about the regional Mayo because he is the regular member. He takes the sessions continuously for 2 to 3 hours daily. So this is the bad thing if we will ignore him. So try to understand Moichan. बिकॉज आइए सर डे वन पे हम लोग कर रहे हैं, अभी तक हिंदी पढ़ रहे थे। अब यही है कि थोड़ा सा हम लोगों को समझने में अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा बेटर नहीं रहेगी ना। रीजनल माइल जो हैं एक ही लोग हैं, उन्हीं की वजह से आप इंग्लिश में टीच करना स्टार्ट कर दो। So Moichan, this is your opinion. If the another participant will agree with you, then I will continue in Hindi or Urdu. So you can ask from the other participants. हाँ, पूछ लीजिए इफ्तिकार भाई क्या पढ़ा जाए, हिंदी में कि इंग्लिश में? ज़्यादा बेहतर होगा अंडरस्टैंडिंग। जो भी क्वेश्चन होंगे तो हिंदी में कर सकते हैं ना, अच्छे से पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं।
हेलो इफ्तिकार भाई। हेलो, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है। इंग्लिश और उर्दू, इंग्लिश उर्दू बहुत चलता है। Yes, yes, we understand English easily. हेलो हेलो हेलो, Yes, yes, सिग्नल वीक है, मैंने रिस्पांस कर दिया, yes, आप yes. It's लोगों ने mean नहीं you सुना। understand English. हेलो, It's mean you understand English. हाँ, उर्दू भी चलता है, इंग्लिश भी चलता है, Yes. जिसमें आप आपकी मर्जी, जिसमें आप कन्वर्सेशन करना चाहते हैं मेरे तरफ से उर्दू Moishanu, इंग्लिश। Moishanu, remember, you can ask from the Iftikharuddin that when he teaches physically to us, then he asks that if there is any one or two participants in our class who understand uh, Urdu and they don't understand Pashto, so he gives the lecture in Pashto. But when someone, for example, one or two members and 40 people doesn't understand Pashto, so he continue in Urdu. So you can ask from Iftikharuddin as well. इफ्तिकार भाई उर्दू में पढ़ें, पढ़ते हैं ना। मेरे ख्याल से उर्दू में सही है। But you should also, उर्दू में भी चल, मेरी तरफ से उर्दू में भी इजाज़त है, इंग्लिश में भी इजाज़त है, आप जिसमें पढ़ाते हैं, but you should पढ़ते हैं, also take पढ़ाते care हैं, about the. कन्वर्सेशन करते हैं, तो मेरी तरफ से But you should इंग्लिश also, उर्दू बहुत चलता है। but you should also think about the who IT and the regional Mayo who don't understand Hindi and Urdu, but you people understand English. You haven't problem in understanding English, so that's why. But they have the problem. They are also the participants. You cannot ignore them. They have also, आतिफ भाई ने भी बोला है कि इंग्लिश उर्दू पढ़ाइए। but Atif understand English. You know, Atif understand English. And the problem is that Regional Mayo have also availed the 100% discount voucher. So we cannot ignore his rights. ट्रांसलेटर यूज कर लें, वो हिंदी इंग्लिश हम लोग अगर यूज कर सकते हैं वो भी यूज कर लें थोड़ा सा। So you should ask from Regional Mayo. दोनों या तो बोथ पढ़ाइए तो। Regional Mayo, Moishanu want to ask from you that they don't understand English easily. रीजनल मालूम, कैन यू यूज टू ट्रांसलेटर उर्दू टू इंग्लिश? Come again? कैन यू यूज ट्रांसलेटर इंग्लिश टू हिंदू उर्दू टू इंग्लिश? Well, but then the translation is gonna be take a bit long for me. या बट क्या किया जाए, आप रेगुलर क्लास भी नहीं करेंगे तो कैसे होगा फिर? हम लोग तो रेगुलर कर रहे हैं अभी। Regional Mayo, they are telling me that we are taking classes regularly. Regional Mayo is not a regular member. So that's why we should continue in Hindi. So what's your opinion? They said you are not a regular member. Well, I am a regular member. I actually, when you asked me today, the reasons why I couldn't attend yesterday, it is because I had the funeral. I had to attend to the funeral. And I also texted you to say I will not be able to attend the session for yesterday. So I am as a regular member as everybody else in this group. But actually, Moichano, I have the solution which is better, best I think. I should continue the lecture in English because you people understand English easily, but you don't understand. This is the reason, final decision, and other thing that if you don't understand easily, you can ask me to translate it in Hindi and Urdu. So I will also translate it uh, in the meanwhile of session. So let's continue. Our lab cannot be start from where we left. It means that if you have left the lab, so you cannot start from where you have left. You should start from the scratch. This is the restriction from VMware. Another point, for example, we want to start lab from slide 44. Then we should start from slide 1. Then we can proceed to slide 44 lab. For example, you have completed labs up to slide 44. So you cannot continue from slide 44. In the next session, you should start from the slide 1. Then you can jump to the slide 44. This is a bit restriction from the VMware. I am disappointed. I was too much
Straight in the morning when I have listened this news. We cannot install any desktop application. You cannot access any service, any online service, any desktop application. This is a very bad news. You cannot use for the personal use. We cannot take RDP, remote desktop protocol of our lab from our laptop, and we cannot take RDP of our laptop from our server. It's me, for example, you have saved your performance. Okay, then you can take RDP from your laptop and you can save the data in your laptop. But now this is not possible because you cannot take RDP. Like for example, I want to take RDP. So let me do a lab for all of you. Let me take RDP of this laptop, this server. So it is possible or not. Let me check. First of all, I should follow these steps. First step is turn on the Windows firewall. So where is the Windows firewall? Can someone help me? I think this is. This is not the thing I want to search. So let me go to the network. कंट्रोल पैनल ओपन करिए. Yes, yes, this is the option I want to search. This is the Windows firewall. This is the option I want to search. Turn Windows firewall on or off. Let me turn off. So this is automatically turn off. Let me okay this. And my IP address of this server is 192.168.110.10. So let me take RDP. So now it is not possible because due to व्हाट इज restriction. आरडीपी? This is the MCSU topic. We will discuss it deeply, but I am not going to discuss about it. I'm just giving the lab through which you can understand the restriction from the VMware. Okay. So what is the IP of my server? You can see it. You can watch it. 192.168.110.10 is my server IP. Let me connect it. So it is not possible because due to VMware restrictions, you cannot take RDP of the server from your laptop, and you cannot save your performance which you have done to the big resources, to the large resources of your server. You cannot save in your local hard disk by taking RDP from your laptop. So it is refused by the server because we have restrictions. So you cannot save the data which you have performed on the server, and you want to save on your local store, local data store. You cannot do this. So this is the restriction, and I'm disappointed, too much disappointed due to this restriction. We cannot save data in permanent memory, HDD, SSD. This server have hard disk, etc., SSD, etc. But remember, let me show you the hard disk in this server, that how much space it has, how much permanent memory it has, but you cannot save your data in the permanent memory. For example, in session 4, I want to save data, so it can be saved. But if I will work continuously, I can access the data. But for example, if I will access the server tomorrow for the next session, so if I want to see my saved data, I can't see. I will start from the scratch. It would be erased. So this is the new restriction from the VMware. So I am also disappointed from this restriction as well. You can see the storage, 49.53 GB. So you cannot use this. You can use but continuously. If you will close this lab and come tomorrow, then it will be erased from the storage memory. So this is a new restriction from VMware. I am disappointed. And the last restriction is data. हाउ टू एक्सेसिबल लैब कैसे करेंगे? What? How to accessible lab? These are restriction from access to data and access to 1 to 44 slided.
एक्चुअली हम ऐसा करेंगे कि मैं आपको साथ साथ में बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने आज की अच्छे यानी फॉर एग्जाम्पल मैंने किया 100 स्लाइड्स और मैं चाहता हूँ कि मैं वही से स्टार्ट करूँ, ये तो नहीं हो सकता ना शिक्षण की वजह से। मैं शुरू से करूँगा, तो मैं ऐसा करूँगा कि मैं शुरू से जल्दी जल्दी करूँगा आप लोगों के सामने 1-2 मिनट के अंदर, यानी वो स्टेप्स समझाऊंगा नहीं, वो तो मैंने आपको समझाया होगा, और फिर वही से स्टार्ट करेंगे। अब सिर्फ यही तरीका बचा है बस। So the last section is लाइव कैसे that लाइव कैसे होगा? ये तो स्लाइड एक्सेस तो कर लेंगे हम लोग, लाइव कैसे तो होगा? मैंने कहा ना कि लेप ऐसा होगा VMware के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक कि जहाँ पर स्लाइड में लेप का इंस्ट्रक्शन गिवन है उसी के मुताबिक ही आप कर सकते हैं। तो हम तो चल रहे हैं इसी के लिहाज से, ऑफिशियल कोर्स कंटेंट के लिहाज से, तो सही है ना, हम लेप इनके साथ साथ करेंगे, यानी इनसे पहले हम नहीं करेंगे। बट आई हैव द बेस्ट सोल्यूशन एज वेल। I have the best solution because I am upset due to these restrictions, but I have the solution available. I will give you the solution after 2 minutes. So wait for the solution. So the last restriction is that if our internet would be fast even, our server can be down from AWS data center as well. They will make our server down anytime they want because we are accessing for free. You know, I'm not paying any charges for this server, and it have huge resources. So listen, VMware have restricted us that anytime we can keep your server down from the AWS data center. Your server can be anytime down. So for example, in today's session, I want to perform labs. So VMware have restricted us that it can also be occurred that this page will not be available for you, this page even, and the server will not be available for you if your internet is fast, because there will be a problem for the from the AWS data center side. This doesn't mean that it is a flaw from the AWS data center side. It means that they are doing this from their wishes, because this is a free resource we are using. So that's why if they want, they can keep it down for us. If they want, they can keep it up for us. Like this is now an up state for us. We can do labs on this server. So this is the new restriction. So it will waste a lot of time of us. So I have the solution that how to save our time if there would be a downtime in the server in any session. I have the solution. I will present after 1 minute. Okay. So lastly, said on these restrictions from VMware on non-public use free servers kept in AWS data center. So I'm too much disappointed. Let me. I have continued to record now. So let me ask from the panel that what I have said they understand or not. So Muhammad Idris, respond me what I have said you understood or not. If you have any question you can ask. Atif Muhammad, Yes, yes, I'm understanding, sir. good responding from Muhammad Idris. Atif Muhammad. Regional Mayon. Yes, sir. It's me. I guess the question that I have on, yes, sir, you were saying? You can ask. Regional Mayo, if you have any question you can ask. Oh, okay. So I wanted to ask that, so these restrictions, they don't apply to, say I've got my own home lab. It will not apply to my home lab. It only applies to AWS, right? Yeah. Yeah, I agree. This is just applied on the free servers we are accessing from the AWS data center. This is not applied on any other, because VMware haven't authority to apply the restrictions on our own servers. They just apply it on their servers, which they have both for us to perform labs. So that's why. So if you have server, we can access that, and there is no restriction on your server. That is your server. You have authority. Okay, sir. Thank you. So do you have a server? Yes, I do have a server, sir. So how many resources of your server? Can you tell me? Um, on the RAM, on the memory, actually, I've got 386 gigs of RAM, and on the storage, I've got 10. Um,
I mean, it's a NAS drive, and it's got about 16 terabyte of storage on it. And it's the actual server is an HP 10th gen server Okay. with two Xeon Bronze CPUs. Xeon CPUs, And I nice. also have yes, I also have a firewall which I can set up. I've got a Dell Sonic Wall firewall where I can set up a VPN on it. Which firewall? Uh, Sonic Wall, Dell Sonic Wall. Okay, 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 okay. And can you tell me the ports in your server? It has four network ports and one ILO management port, and yeah, that's basically the ports that are on the server to connect to the network. But also, it has a connection for the VGA connection, the USB connections as well, USB ports. And Reginald Mayo, I want to ask about your server that your server can be accessible by internet or not. Is there any secure connection or any VPN connection or can be accessed directly through the internet? Yes, it can be accessed via internet. Like I was saying, I can set up a VPN connection on my Dell Sonic Wall so we can access it via internet. So now are you online on your laptop or your mobile? At the present moment, I'm online using my tablet. Tablet. So if you can show us your server so we can see it with how we can access your server. So if you can give us a demo, so due to these restrictions, we cannot perform lab easily. So due to that, we can perform lab easily. If you can show us the demo. Okay, what I'm going to do is I'm going to record a small clip, video clip, so I can send to you. Then we can take it from there. So Because at the okay, present moment where I am, I can't access the server. The location where I am is not where the server is. so your server is not on, Yeah, at the moment I've got it down. but the servers are up anytime. So why your server is down? Uh, we recently relocated where we had our servers to a different place, so we had not yet put it up. It's still down up until tomorrow. Okay. So my solution is that, for example, the first restriction, I have the solution for it. Now look at the solution. They said no access of any website on any browser. So it's mean that they have restricted us to don't use the server for the personal use. So I think this is the uh, good restriction as well. But you people will understand that this is a bad restriction. I'm also picking it like a bad restriction. But if we look at all, then it is not a bad restriction because their server is for us to use for the public labs, not for the personal use. So I think this is the good decision from the VMware. So Mr. Reginald Moyo, do you agree with the VMware this decision, the first decision? Yes, I agree, sir. So Mr. Moichano, do you agree with the VMware first restriction? because not good decision, because I lot of people not a public server, then perform an accessible, yeah, try to best and try to best browse try to best
knowledge guidance to accessible browser. Yes, yes, I agree, but they have restricted because this is the free server, which is lot of which people is for. lot of people lot हाँ lot of people के पास नहीं होता है कि पब्लिक सर्वर हो उनके पास ज्यादातर पर्सनल यूज करते हैं ना तो उनके लिए तो दिक्कतें होंगी हमें सीखना है तो हम कैसे कोई चीजें सीख पाएंगे अगर हमें कुछ फाइंड करना है इधर तो कैसे फाइंड होगा Yes, yes, you are 100% right, but they have restricted because this server is just for the labs and everyone is using personally, so that's why they have kept the restrictions. Let me ask the restriction opinion from the Mr. Iftikharuddin. So, Mr. Iftikharuddin, do you agree with the VMware first restriction? Mr. Iftikharuddin, do you agree with the VMware first restriction? No response from Mr. Iftikharuddin. Mr. Atif Muhammad, do you agree with the VMware first restriction? No response from Atif Muhammad. Muhammad Idris, do you agree with the first restriction from VMware? Yes, sir, I'm agree with them because the VMware can advertisement his product and many things. And if they do this restriction, so it means there is something behind this. So I'm agree with this. Good. And let's ask from the VOIT. VOIT, unmute your mic and tell us that do you agree with the VMware first restriction? No, sir, Why? because due to which we cannot browse any website. No, no, but you can browse your website on your local host as well. Yes, that's true. But actually, I think they are restricting us for security purposes. Yes, yes, this is the main point. I want to ask from all of you. So this was the accurate answer. VOIT, you are in the you have answered correctly, too much correctly. Thank you so much. So the second Okay, question sir. from Thank all you. of you. Thank you so much for responding. And who don't respond, so they are just wasting our time. So can't perform lab which we which one we want. Like for example, I want to create VM. So I cannot directly perform that lab until and unless I haven't reached to that slide. In which slide they have taught us how to create VM. So do you agree with this decision, Reginald Moyo? What was read again for me, sir? Actually, VMware have restricted us that, for example, if you want to perform any lab in their server, like this server, so we cannot perform randomly. For example, I want to perform a lab randomly. I want to create a VM, virtual machine in this server. So they have restricted us that you cannot. You can, if the slide will come and we will instruct you that how to create a VM, then you can perform lab. Else you cannot perform lab directly, randomly. So this is a good restriction from VMware or not. Do you agree? Um, I really can't understand the question and the reasons why the restrictions have been put in that way. But I think I'll say I don't agree. Why you don't agree? Because we're supposed to be able to create VMwares on a server as long as it's online. Yes, good answer. Let us from the Muhammad Idris. Is it a good decision? Yeah, so I think it's a good decision because uh, if we study whole the instruction and this lab is actually for the student because professional is not working on this lab and this for student. If the student not study instruction and they can just do his lab without instruction, so they will be face difficulties. So I think for this purpose, they are restricted. Good answer from Muhammad Idris. Then let's ask from the Atif Muhammad.
Atif Muhammad have left the meeting due to asking from him. Let's ask from the Iftikharuddin. No response from Iftikharuddin. And previously he haven't also didn't respond. Let's ask from the Mohit Shanu. I think it is a not good decision because some people, some student cannot perform the lab and accessible knowledge. But can the last participant tell us that he agree or not? Who IT? Yes, sir. I am agree with this decision because people are using this feature, misusing this feature actually, because VMware force us to complete this step after reading these slides. That's why they implemented. So I agree with the answer of who IT and Muhammad Idris Khan. They have answered perfectly because if you will not go through the instructions and you will perform lab, then this is not a good way because you are the student. You're not the professionals. Like professionals have their own servers. They can perform the labs on their servers. So that's why I agree with पर the मेरा क्वेश्चन फिर यहाँ पे ये है कि अगर हम लोग लैब नहीं सीख पाएंगे तो कैसे इस चीजों को सीख पाएंगे? अगर हम परफॉर्मिंग लैब नहीं कर पाएंगे तो कैसे सीखेंगे? Muhammad Idris Khan respond to Moichanu. I think he has some misunderstanding. वो साद मेरे ख्याल से इनको इंग्लिश में उस तरह से समझ नहीं आया तो इनको उर्दू में बताओ तो समझ जाएगा उनको रिस्ट्रिक्शन की अभी तक समझ नहीं आई कि इसमें क्या है मोशानु बात ये है कि वीमवेयर ने कहा है कि आप लेप परफॉर्म कर सकते हैं मगर बात ये है कि जो मैं कहूँगा वीमवेयर के तहत स्लाइड में आपने वही लेप करना है अगर आपने पहले से करना है या बाद में तो आप वो नहीं कर सकते दैट इज नॉट अलाउड इन वीमवेयर HOL यू कैन नॉट डू ये रिस्ट्रिक्शन लग गई है आप समझ आ गई जी Good. So let's go through the third restriction. We can perform lab according to our official course content flow slides. It means that we will follow our official course content and when the lab will come, we will perform. Before lab will not come, we cannot perform lab. So let's ask from the users that they agree with this decision from VMware or not. Let's ask from the Huawei IT. Yes, sir. We can perform lab according to our official course contents flow sites. Yes, sir. This is good decision because when people read slides and instructions, then they can continue. They can perform the lab because most of people are using AWS and this as well for RDP purposes and other purposes and can use this VM to attack other people. That's why they restricted us uh, I to like perform this only. point. I like Yeah. this point. Like you have said, a take. So yes, there is a security problem. Normally, this Khan have answered in the first question on the first restriction that there is some security problem to the VMware. That's why they have used some restrictions on the public users who access the server for free of cost. So agree on this. So let's ask from the Reginald Moyo. Yes, I think I also agree. Since security actually is a very important thing. So if a VM virtual machine is gonna pose a risk, I think then it would be much better to restrict that. Mohammed Idris Khan. Uh, yeah, Sad, I also agree with this point because if we follow the official slide, definitely we will be look the latest updates. But if we have our old slides, so we have don't be any updates and we follow the old process. So it's a good that we will be follow the official slides. So the VMware can also updates their slides with their lab. So it's a good restriction. Good answer. Let's ask from the Mohit Shanu.
हमसे मत पूछिए फिर, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि VMware ने कहा है कि आपको, अगर मैंने को ऑफिशियल कोर्स कंटेंट दिया है 600 स्लाइड का, आपको उसके लिहाज से लैब करना होगा, उससे पहले वगैरह नहीं कर सकते। तो आप इससे एग्री करते हैं कि नहीं? तो ये पहले तो हमें फिर ये VMware का जो आप चला रहे हैं, ये डेमो वर्जन है क्या है, या ऑफिशियल वर्जन चला रहे हैं जो आप चला रहे हैं? ये वाला, अच्छा। हाँ हाँ। ये ऑफिशियल है। ये ऑफिशियल फ्री, आपको अगर ये इंस्टॉल कर देंगे तो हर सिस्टम पे वर्चुअल वर्चुअल बना लेंगे मशीन हाँ पे ये, जो कनेक्ट रहेंगे। हाँ ये आप सबको मैं करवाऊंगा ये चीज़, सही ना? तो आप इससे एग्री करते हैं कि नहीं, ये बताएंगे? पर मुझे अभी VMware के बारे में पूरी तरीके से पता नहीं, तो नहीं मैं नहीं, कैसे agree मैंने जो करूँ? पॉइंट कहा है सिर्फ उसका आंसर दीजिए कि इस बात से आप एग्री करते हैं कि नहीं। वी कैन परफॉर्म लैम अकॉर्डिंग टू आवर ऑफिशियल कोर्स। हाँ, जो ऑफिशियल कोर्स है उसी के तहत चलें फ्लाइट पे, उनका कहना भी ठीक है कि हम फ्री में क्यों दें। Okay, so good answer from our panel on this question. Let's go to the next point. Our lab cannot be start from where we left. Oh, I disagree with this decision. Sorry, if you people agree, but I disagree. So let's move to IT. What is your opinion about this? Yes, sir. I think they don't want us to consume their resources. That's why they impose this decision. Uh, But do you agree with that's this? why. Yes, I'm also agree with this decision because people who try again and again, they can You do mean step by practicing? step this task again and again. That's why they can learn more and more. You mean this step is for practicing and revision? Yes. Yes, yes, this is the valid point. This is a perfect valid point. But finally, I disagree. Let's ask from the Muhammad Idris Khan. Yeah, it's such a confusable point that what should we do? But I think it's good on this way that we complete the lab at one time, because if we do on the next time, that we will such a confusable be on the next time. So it's also bad or good, but I think it's a good. Look at me, Muhammad Idris Khan. You said it is a good, but when we will perform our labs on the regular basis, then it will waste a lot of time of us. So remember this point as well. So let's ask from the regional Moyo. Yes, I think also it's basically because of people abusing resources on the network. So I guess the restriction is to minimize, that abuse of resources. So yeah, I agree. Why you agree? What is the valid point behind that you agree with this point? I disagree totally. Well, it is basically their rule, and most probably they must have investigated and figured out that it's a valid point to restrict, you know, based on the people abusing their resources. ओके, मोहित शानू, आप रिस्पॉन्ड कीजिए। सर ये मेरा तो कहना यही है, अगर मैं जहाँ पे लैब को छोड़ कर जाऊंगा, अगर फिर मुझे स्टार्ट पे वही लैब स्टार्ट करना पड़ेगा तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो आई ये टोटली बात तो डिसएग्री। मैं भी कह रहा हूँ, इस वजह से तो मैं डिसएग्री कर रहा हूँ, मगर हमारे सारे पेरेंट कह रहे हैं कि नहीं, प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस तो सर, प्रैक्टिस प्रैक्टिस तो जिंदगी भर प्रैक्टिस ही करना है जब काम करेंगे आप। मगर टाइम तो ज़ाया होगा ना इससे। टाइम बहुत जाया होगा, अगर आप पढ़ा रहे हैं, लाइव करा रहे हैं, तो स्टार्ट पे लाइव करना पड़ेगा ना हमको, 1 से लेके। हाँ, अगर मैं 100 पे पहुंच गया, 99 पे मुझे कल 100 पढ़ना, फिर 199 तक फिर से पढ़ें, फिर 100 पे जाएंगे, इससे तो टाइम जाया होगा नहीं ना। नहीं, ऐसा होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं 400 स्लाइड पर हूँ, मैं लैब कर रहा हूँ,
और मैंने छोड़ा तो फिर कल से मैं अगर 401 स्लाइड से करना फिर चाहता हूँ मुझे तो चार मैं सौ शुरू नहीं, मुझे 1 से लेकर बिल्कुल स्टार्ट से मुझे करना पड़ेगा, ये रिस्ट्रिक्शन है, समझे? समझ गए फिर। तो ये अच्छा डिसीजन तो नहीं है ना। नहीं नहीं, ये टाइम वेस्टिंग डिसीजन है। ओरिजिनल मो बाकी इन्होंने अपनी तरह इन्होंने इन्होंने बाकी बीएम और बीएम वेयर ने अपनी तरीके से सब कुछ किया है। उन्होंने पार्टिसिपेंट को देख के नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, ये कहने उन्होंने बस ये फ्री एक्सेसिबल को रोकने के लिए, जो हम लोग फ्री में एक्सेस कर रहे हैं और जो लाइव कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए इन्होंने, नहीं, जैसे हम लोग फेमिलेटर यूज करते हैं, तो फेमिलेटर है कि टोटली फ्री है। लाइव अब हम लोग लाइव कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसमें कमांड चला सकते हैं, लेकिन उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप वर्चुअल नेटवर्क बना के काम तो कर सकते हैं। ऐसी कुछ चीज़ें इनको देना चाहिए उस पे, ये उसकी अगर आप इतनी रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं तो उसका कोई दूसरा देना चाहिए ना उसका। तो वो जो उन्होंने दिया है कि आप पैसे को मॉडल पर जाए, पैसे दे और फिर आप एक्सेस कर सकते हैं सारी चीज़ें। तो मसला यही मैं चाहूँ कि बस बस इन्होंने आई थिंक यही वजह है कि वो चाहे कि स्टूडेंट प्रैक्टिस ज़्यादा करे, हो सकता है यही वजह हो इन्होंने ये रिस्ट्रिक्शन लगाना। हाँ, लेकिन टीचर के लिए अच्छा नहीं, स्टूडेंट के लिए चलो ठीक है। Mohammad Idris Khan, regional mayor IT. You know that Moichanu has told me that I disagree with this decision, and I also disagree. But you three people agree. So don't know why you people agree. Don't know. I think you are on the VMware side. You are not with us. Why? Can all of you three can respond to this? यार हिंदी थोड़ा सा उर्दू पढ़ाइए सर ने, तो हम ऐसे तो बाउंस होगा सब मेरे भी। अभी अभी तो ये दो लोग आए हैं, आज ही क्लास के इन दो लोगों ने भेजना। Sir, Yes, I am yes. agree with this decision because they are giving this lab for free. That's why they don't want us to consume their resources, server resources. Uh, that's why uh, they impose this decision. Actually, doing things again and again are not waste of time, but for teachers, uh, if someone is VMware certified, then they should remove this ban from teachers, I think. Yes, but Hova IT Regional Mayor Mohammad Idris Khan kindly give me the solution that Mohit Shanu has raised. Like he said that, for example, if we are on the 500 slide and we want to continue from the 501 slide tomorrow session, so we cannot perform the lab from where we left. We should start from the first slide. So, like it is too much impossible thing. So, how you three people agree on this decision? Like, I don't understand how you people agree. I think in the current time, many people can look at not good, but I think in the future they will be remove this restriction if the people can be facing the problem about it. No, no, but don't talk about future. Tell us about present restrictions from VMware. So you said I agree with this. Why you agree with this? This is a difficult problem for us in future. I think it would be better if you discuss this problem with VMware. Yes, yes, but we will perform the labs in future, so we should discuss with each other so we can give the best solution with each other because it is a big decision, I think. But you three people agree. Don't know why. I am agree from their perspective. From my perspective, I am not agree with this decision. But you said I agree. Yes, I said, but from their perspective, that's why. And Regional Mayo, Regional Mayo, you respond on this. Yes, sir. You said I agree with this decision, but most of the people disagree with this. So how you agree? I don't understand why you agree. Well, like I had said earlier on, sir, it all depends on what do they, I mean,
come to an agreement as VMware? How did their policies and their rules as VMware? So if they say they're going to restrict this, uh, basically on our side it's a disadvantage, but then there's most probably something that led them to that decision, and we cannot really go against it. Obviously, yes, we become disadvantaged as users, people who use that service. But yeah, I guess the reason why I'm agreeing is because most probably that's the decision that also VMware took. Yes, yes. Now this is a valid point you have raised. This is the valid point you have raised now, and I agree with this point. This is the point that this will be a little, not little bit. It will be a huge difficulties in future for us by performing the labs where we left. So let's go to the next point. For example, we want to start lab from slide 44. Then we should start from slide 1. Then we can proceed to slide 44 lab. So this point is discussed already. Let's move to another point. We cannot install any desktop application on the server. So Mohammad Idris Khan, agree with this decision or not? Sir, please can you explain this sentence? It's mean that if you want to install any application for your personal use, like on desktop, like there is a Google Chrome application, like there is Play, VMware, Odyssey application. So for example, it is my laptop desktop. So there is the application like VUZE, like VMware, like Chrome. So for example, I want to install these applications on my server, which is free to me. So this is the restriction from VMware that I cannot install any desktop application on the server. So do you agree with this decision? Yeah, I agree with this decision because I think there will be storage problem with the VMware servers, so that's why they will be restricted. No, no, there's no problem of storage. I have showed you that there are 48 GB storage available for us in the server. That is too much for us. Okay, so I think they will be face some problem about that, so that's why they will be restricted. But before these restrictions, I think they will have some problem. So that's why they will do this. I think. Yeah, I think some we are security problem And or whatever. and Moichano, you you are सर responsible. ये तो सर ये जो इन्होंने डिसीजन लिया हुआ है ये तो डेमो वर्जन पे लिया होगा। अगर मैं परचेज करके पे करूंगा तो ये सब रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं इन पे। नो नो, ये जो है ना ये इस सर्वर पर, ये हम इस सर्वर की बात करें हमारे लैब वाले की, यानी इस पर अगर मैं पर्सनल यूज़ किए डिस्टर्ब एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो वो अब नहीं कर सकता। तो आप इस पर एग्री करते हैं कि नहीं? इन्होंने लिया है कि एक ही वर्चुअल मशीन पे एक ही इंस्टॉल करें सॉफ्टवेयर। नहीं इनका ना, नहीं ना, स्टेटमेंट भी है। नहीं समझे ना। ये तो इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई है ना कि अब आप चाहिए कि आप लेब उस तरह करें, मगर आप उस तरह लेब नहीं कर सकते। आपके लिए बाय डिफ़ॉल्ट जैसे यहाँ पर क्रोम है, तो सही आपके लिए हम बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल करेंगे वीएमवेयर ने कहा है, मगर आप खुद नहीं कर सकेंगे अब। आई टोटली डिसएग्री, क्योंकि फिर हमें कुछ अगर चेक करना हुआ या कितना सर्वर पे लोड आ रहा है क्या है कैसे, तो कैसे चेक करेंगे। तो ये पॉइंट तो है ना, ये तो वैलिड पॉइंट है। So let's ask from the original Moyo. Hello, sir. Yes, yes. Yes, I'm also agreeing to that decision because basically, most people they use you know that service to run their own applications, and which becomes a personal application rather than just using it as a study environment and learning environment. Then sometimes it spells out monetary value. Applications that they run on top of that server, sometimes they'll be getting paid for that service. So I guess I do agree. Yes, yes, good point. This is a good point. Let's ask from the another participant who IT. Yes, sir.
There are two perspectives here. We cannot install any desktop application. I think desktop application is not required here. That's why they imposed this rule Yes, here. yes, yes. This is the Uh, point. This service available for us for just labs, and they are giving facility for labs. So that's why this is the point. This is for personal use. This type application. They will restrict us to don't use this type applications for the personal use. That's why. yes, sir. Continue. Or there may be a security issue because when someone want to install their own application, that's तो why. क्या सिक्योरिटी कैफे सिक्योरिटी रीजन कौन कौन से हो सकते हैं? चलिए, अगर नेट चलाने पे हमारी सिक्योरिटी रीजन ही ब्रेक हो रही तो फिर एक्सेसिबल क्यों दे रहे हैं फिर? जो फॉर ये बताइए। एग्जांपल आप फॉर एग्जांपल किसी और का पीसी इस्तेमाल करते हैं तो आईपी एड्रेस तो उसी का यूज होगा। और आप किसी ये सर्वर तो पे ये अटैक कर रहे हैं तो फिर भी। ये तो फिर किसी के भी सिस्टम पे, किसी भी ऑफिस के सिस्टम पे भी हम अगर भी हम यूज कर रहे हैं तो उससे भी तो हो सकता है ना। ये तो फिर कहने की बात हो गई है। अब इन्होंने बस अपनी तरफ से लैब को वर्चुअल वो कर दिया कस्टमाइज, हाँ जी, कि मुझे कस्टमाइज फ्री कर ऑफ दिया। कॉस्ट नहीं देना है। हाँ, कस्टमाइज किया, मुझे फ्री अब ऑफ पता कॉस्ट चल सब गया। नहीं देना है। हाँ, ना इसमें सिक्योरिटी पैसे आप लीजिए, पे करिए और मुझे पैसे दीजिए, मैं यही कमाऊं, मैं बात है। फ्री में कुछ नहीं दूंगा। ये है बात इसमें, और कुछ है अगर नहीं इसमें। अगर मेन आप रीजन पे ये कर है इसका। बात सुनो, अगर आप पे करते हैं तो मतलब आपकी ईमेल वहां पे आएगी उन लोगों के पास और वही आपका कह रहा हूँ एड्रेस ना, वगैरह ये जहाँ आएगा। यहाँ ना कोई, यहाँ पे ना कोई सिक्योरिटी रीजन है और ना ही कोई इनकी वो कस्टमाइज की। इनको बस इन्होंने कस्टमाइज किया है कि मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं देना है, आप हमें अगर पैसा देंगे तभी मैं दूंगा। पैसा देने सिक्योरिटी रीजन सही हो जा रहा है इनका। यही हाँ बात है। लेकिन रिसोर्सेज भी उनके ज़ाय हो रहे हैं ना, ये भी है ना हाँ एडब्ल्यूएस वाले। तो वही है। तो इसमें सिक्योरिटी रीजन, इसमें सिक्योरिटी रीजन नहीं आ रहा है जो आप बार बार सिक्योरिटी रीजन ला रहे हैं। सिक्योरिटी रीजन किस तरह से ब्रेक हो रहा है ये बता दीजिए। फायरवॉल उनके पास लगे होंगे, उनके हाँ, पास ज़रूर में लगे L3 होंगे, के ज़रूर फीचर्स लगे होंगे। होंगे। ऐसे थोड़ा नहीं आप घुस जाएंगे किसी के सर्वर में आप। नहीं ये बात नहीं है फाइन ना। मत फॉर कीजिए। एग्जांपल आप फॉर एग्जांपल कोई ऐसा आप स्क्रिप्ट चला आईपी सकते एड्रेस हैं। आईपी नहीं, आईपी बात एड्रेस पे सुनिए। आईपी एड्रेस पे कभी वो क्या कहते हैं, किसी का सर्वर नहीं हैक होता पब्लिक आईपी और से। पब्लिक बात आईपी बात सुनिए पब्लिक। भाई, पब्लिक आईपी से नहीं, लेकिन ये तो ऑलरेडी पब्लिक आईपी से कनेक्ट है। फॉर एग्जांपल आप किसी और हाँ, मतलब किसी फॉर एग्जांपल आप किसी पे डीडोस अटैक करना चाहते हैं तो यहाँ से एक स्क्रिप्ट रन करके आप कर सकते हैं। तो आप नहीं कर कैसे सकते कर क्या? जी, नहीं कैसे हो कर सकता सकते है हैं इसलिए। फायरवॉल। अगर इतनी बड़ी कंपनी है, बीओ मेरी छोटी मोटी कंपनी है क्या कि वो तो लेके बैठ गए छोटे कोने में एक मशीन? गूगल के छोटी मोटी कंपनी है क्या? वो उनके पास रैक वाइज फायरवॉल लगे होते हैं। फायरवॉल को तोड़ना ना आसान बात नहीं होता है। भाई या बंदे किसी का हैं जो वाईफाई का सोच सकते वाईफाई हैं। वाई अरे होने के तो बहुत कुछ हो सकता है। गूगल का सर्वर भी हैक हो जाता है, माइक्रोसॉफ्ट का भी हो जाता है, लेकिन ये एक पॉइंट आप इस No, पे no, no, लगना no. पड़ता Disagree, है। disagree, disagree with Moishano, because this is not possible that we can hack any kind of service from Google. Like this is they too much security. You cannot. हाँ बिल्कुल। ये तो हाँ, गूगल गूगल तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत सी सिक्योरिटी रीजन होती है। अब भी है मेरी छोटी मोटी कंपनी तो सर No, no. है कि वो आ VMware is a जाएगी। big ये company. हाइपर भी में अभी तक तो ऐसा जी। VMware is a big company. They have big security. या बिग कंपनी एंड बिग सिक्योरिटी, क्योंकि अभी तक ये फ्री ऑफ कॉस्ट चला रहे थे। अभी इनको कोई रीजन कोई इशू नहीं हुआ। इन्होंने बस अपने लैब को कस्टमाइज कर दिया कि मैं मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं वैसे देना है। वैसे सिक्योरिटी रीजन यहाँ पर कुछ जो है पे ना, यहाँ नहीं। पर ये बात याद रखिए, यहाँ पर मैं बिल्कुल भी 100% एग्री नहीं करता इस पार्टिसिपेंट से, वो आईटी से और मोहम्मद इदरीस खान से, ओरिजिनल मोयो से। You all three people, I disagree with you because you said in many questions you said me that there can be a security problem. So I disagree with this because before this they haven't security problem. Before this their server were hacked. या That this why they have do due to those reasons they have restricted us to avail these kinds of services. So I disagree with this decision. They haven't security तो problem. They इन्होंने just बस need money. कर They just need money, जी nothing जी। else.
जस्ट टेक अ मनी कि इनको प्रॉफिट हो। मुझे VPN ने आज कंपनी सिस्को इतनी बड़ी कंपनी क्यों है, क्योंकि उसने सिम्युलेटर नाम की एक ऐसी चीज लॉन्च कर रखी है कि आप वर्चुअल नेटवर्क को अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसने कुछ भी अपना पैसा नहीं लेता सिम्युलेटर यूज करने के लिए। So Muhammad Idris Khan, now it's upon you. Respond please. How you said that there can be a security reason? क्यों क्यों भी बताइए आप हमें। उसका उसका सिम्युलेटर इतनी बड़ी देता है, 15 ने पूरा लैब कर सकते हैं, पूरी Yes, आपको this was a bit एज ए from all of you. नेटवर्क पूरा। Except of Moishan, you have confusion. You said security reasons. Can someone respond in the panel? How security reasons? Yes, yes, I can respond. Yes, respond please. असल में मैं उर्दू में बताता हूँ ताकि उसको हाँ, समझ आए। उर्दू में बताइए, जी सभी जी लोग उर्दू जी में बताइए, थोड़ा आपकी मर्जी नहीं, कन्वर्सेशन आपकी हेल्दी मर्जी होता है, है ना। जरूरी नहीं है, जरूरी एक भी नहीं, आपकी मर्जी। जी जी। अ, असल में सिक्योरिटी रीजन ये हो सकता है, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ऐप या वेब सर्वर या जो भी चीज इस पे चला रहे हो, ठीक है, आप उस पे मतलब अपना एक एग्जीक्यूटिबल रख सकते हो। ये तो आप पब्लिक आईपी है, कोई भी मतलब उसको वो कर सकते हैं। तो जिस तरह एडब्ल्यूएस पे लोग करते हैं, ठीक है, लोग आरडीपीज मतलब फ्री टायर अकाउंट को वो करके फिर आरडीपी से है जो वॉच टाइम वगैरह का आपने सुना है, लोग वॉच टाइम बढ़ाते हैं यूट्यूब का, हाँ और हाँ, सब कुछ लोग करते हैं चीज़ों को यूज़ करके। मैंने देखे हैं प्रैक्टिकली, ये मैं वैसे भी नहीं कह रहा, ठीक है। ये बात आपकी लोग सही है। हाँ, भाई जी जी, लोग लेकिन इन चीज़ों आप को इसका कोशिश करते हैं जी। वो तो यूज देखो, अल्लाह ताला ने मोबाइल को बनाया है, इसको अच्छा यूज करके हम लोग पढ़ भी रहे हैं, इसका गलत यूज करके लोग कुछ भी कर रहे हैं। तो दोनों हैंड मसला ये आपके है हाथ ना, में। इन लोगों में मसला ये है, इसलिए इन लोगों ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है, ठीक है भाई। और लेकिन हाँ, लेकिन ये कहना गलत है कि इन्होंने मतलब सिक्योरिटी रीजन के लिए, सिक्योरिटी रीजन इनका बेस्ट थिंग नहीं है। बस ये आप अभी पैसा दे के ये लैब ले लेंगे तो इनके लिए सब सिक्योरिटी रीजन अच्छा हो जाएगा। हाँ यही बात है। हाँ, पैसे की बात भी है, मैं आपसे एग्री करता हूँ इस बात पे कि पैसा तो इन लोगों का काम है ना, इसलिए तो सर्वर हाँ, बना रखे वही हैं इन कह लोगों रहे ने, बिजनेस है भाई। हैं, बिजनेस है, बस सिक्योरिटी रीजन नहीं, क्योंकि अगर ये कंपनी चला रहे हैं तो जाहिर सी बात है भाई, छोटी कंपनी तो है नहीं। हाँ जी यही जी। बात मैं भी जाहिर एग्री सी बात करता है, हूँ कि छोटी कंपनी है प्रॉब्लम नहीं। पैसा है, प्रॉब्लम सिक्योरिटी नहीं है। ये लोग कह रहे थे सिक्योरिटी है। प्रॉब्लम बार बार इसमें सिक्योरिटी की कोई नहीं, बस इनको पैसा कमाना है। और अब अभी देखिए, अब हम 500 लैब कर रहे हैं, तो 499 किया और 500 हमको कल करना है। फिर हमको 499 करने के लिए हम 2 घंटे बैठे, 3 घंटे कवर करें टाइम, फिर वहां तक पहुंचे, फिर 500 लैब करके फिर वापस आए, फिर हमको कल 501 करना, फिर हम टेक टाइम आदमी वो चीज करते करते ऊब जाएगा। हमें पढ़ना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, इंटरव्यू फेस करना है। और ये लोग कह रहे हैं हाँ कि बिल्कुल, प्रैक्टिस हो ये बात जाएगा। तो इन लोगों ने। नहीं नहीं, और हमारा पैनल कह रहे हैं कि प्रैक्टिस हो हमें जाएगा, इसमें प्रैक्टिस की कहीं हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। प्रैक्टिस की कोई वही नहीं है। देखो सब चीजें देखिए, हाइपर जो बीएम वेव है, वो सब चीजें यूज कहीं पे नहीं होती है। कहीं पे पूरी चीजें यूज नहीं होती, कहीं कुछ यूज होता है, कहीं कुछ यूज होता है, कहीं वर्चुअलाइजेशन यूज होता है, कहीं फिर डेटा का स्टोरेज जो यूज होता है। एक ही जगह सब चीजें नहीं यूज होगी जो हम लोग पढ़ लेंगे कि हाँ सब कंप्लीट So है, एक ही कंपनी है, अब पूरे रूल हैं, रेगुलेशन how भी हमें IT जो है, यूज होता how IT is agree with the Mohit Shanu point that there is no security problem. He was at the wrong side when he answered like security reasons. So he accepted his mistakes. Now let's go through Regional Mayor. Regional Mayor, you have told in many answers that there can be security reason. So explain how security reason. सर सिक्योरिटी रीजन भी है सर, नहीं वो नहीं, तो मैं वो नहीं इंक्लूड है, वो करता हूँ, नहीं, वो नहीं नहीं नहीं, लेकिन नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है। सर असल में सर आप फॉर एग्जांपल कोई ऐप वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं, तो उस ऐप के थ्रू या कोई ऐसा स्क्रिप्ट आप रन करना मतलब कर सकते हैं उसी पे, तो वहां भाई। से वो आप फायरवॉल लगाया होगा, ऐसा तो है नहीं। वो क्यों आपने नहीं स्क्रिप्ट लगा डाला, यार, उसके ये तरीके क्या से है फॉल्स फायरवॉल कैसे यहाँ कर पर लगाया हुआ है यार, आप लोगों को नजर नहीं आ रहा। मैंने हाँ? जो फायरवॉल दिखाया आप अभी स्टार्टिंग में, हाँ? फायरवॉल उन्होंने यहाँ पर विंडोज फायरवॉल है ना, एंड यूजर सिक्योरिटी के लिए। एंड पॉइंट और डेस्टिनेशन पॉइंट दोनों पे ये लोग रखते हैं। हाँ रखते हैं आप यार, एंट्री ये कहाँ पे कैसी करते बात आप कर रहे हो? हैं। जी वो आई टी, अब बताइए सिक्योरिटी रीजन नहीं है। हम लोग
ठीक है सर जी, आप अगर कहना चाहते हैं तो ठीक। नहीं नहीं, आपको एग्री करना पड़ेगा, कंफ्यूजन दूर करें, आप गलत साइड पर हैं। ठीक है, फायरवॉल की बात इन लोगों की ठीक है, वैसे सर मैं लेकिन आपको बता दूं, मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ पे सिर्फ एक नेट एक्सेस करने के लिए हम लोगों ने फिर फायरवॉल लगाया कि पूरी कोई फ्री फ्री में एक्सेस ना कर पाए नेट। उसके लिए वो लोग उसको नहीं तोड़ पाते हैं। वाईफाई के पास, वाईफाई पे पासवर्ड नहीं, ऑथेंटिकेशन लगा रखा है। बिना ऑथेंटिकेशन जब तक मैं परमिशन नहीं दे दूंगा तब तक वो यूज नहीं कर पाएंगे नेट। So original Mayo respond as that why you have answered like there is security problem, that why they have restricted us to use many services. So explain the security point we have arranged in many answers. Regional Mayo, it's over to you. So I had not said it was a security risk, but what I said is that people take advantage of that free service, and they use it for their own personal gain, and also, congesting the network for a free service, So it's mean that you also over a free service. agree with Moishanu that there is no security reason behind these restrictions. Yes, I don't think there's any security risk, because VMware is actually a very big company, like you Yes, were yes, saying, yes. and their This is the security is point. pretty This tight. is the point. This is the point. Muhammad Idris Khan. Yeah, I also agree with you that I think there is no security issue. But why you have told in many answers that there is security reason? You have told. No, I told in the last, but I think now my mind is clear. Yes, yes. It's mean you are confused. Yeah, yeah. Now So now you are I'm clear clear about it. about discussion. So discussion credit goes to Ho IT and Moichanu because they have cleared the many points to the panel. Thank you so much, Ho IT and Moichanu. ओके, थैंक यू। थैंक यू। Let's move toward another point. We cannot take RDP of our lab from our laptop and cannot take RDP of our laptop from our server. So Muhammad Idris, agree with this point or not? Sad, I don't understand on that sentence. It's mean that, for example, this is the server. I have used it for the personal use, and in this server there is a problem that you cannot save your data. Okay, so I want to save the data. So in the previous time, what we have done, we take RDP used for some taking some accessing of any server. So we will take the access of the server from our laptop, and we will save the data from copy the data from the server and save it in our local data store in the local storage. So now this is not possible. You cannot store your data which you performed on the server. You cannot save your data on the local store by taking RDP of your server. So I think you have understand. So tell me that you agree with this point or not? Sad, I will be give response at last because I have Yes, some yes, yes, connection problem and yes, yes. the sound is not. Moichanu, Moichanu. सर हमको पहले समझा दीजिए आरडीपी है क्या, इसका कुछ मतलब नहीं ये है, समझ में आ रहा है आरडीपी अभी। का मतलब ये है कि आप एक दूसरे सर्वर या दूसरे क्लाइंट का अपने क्लाइंट से एक्सेस लेते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका पीसी जो है ना, उसका मैं एक्सेस लेता अच्छा हूँ अच्छा और अच्छा वो नज़र आएगा मेरे लैपटॉप ये पर वो और मैं आपका लैपटॉप यूज़ करूँगा अपने लैपटॉप से। इसका मतलब ये है। तो पहले हम क्या करते थे, पहले हम सर्वर पर जाते थे, इस पर काम करते थे, तो वो इस सर्वर में ये प्रॉब्लम होता था कि हम इस पर सेव नहीं कर सकते थे। तो हमें सेव करने के लिए इसका डीपी लेना होता था अपने लैपटॉप से, फिर हम इसे कॉपी करके अपने लैपटॉप पर पेस्ट कर देते, तो हमारे लोकल डेटा स्टोर हमारे स्टोरेज पर हार्ड डिस्क पर वो सेव हो जाता था। अब हम आरडीपी नहीं ले सकते रजिस्ट्रेशन की वजह से, तो हम अब अपने लोकल सर डेटा ये तो स्टोर पर भी बहुत सेव नहीं कर बड़ी सकते और इस पर भी। तो आप इससे डिसएग्री करते हैं या एग्री? टोटली डिसएग्री है, क्योंकि अगर हमारे पास हमें लैब करना है या हमने वर्चुअल मशीन बना रखी है 50 को, अगर हम एक एक पे जाके देखेंगे तो उसमें टेक अ टाइम होगा ना सर। कैसे कैसे कर पाएंगे फिर? हाँ, तो गुड ऐसे पॉइंट। रहता आरडीपी के थ्रू हम तुरंत ले लेते थे। हाँ, वो आईटी रिस्पॉन्ड प्लीज। यस सर, मैं मतलब यहाँ पे न्यूट्रल रहूंगा, क्योंकि एग्री भी करता हूँ और डिसएग्री भी। उसकी दूरी जब दोनों मैं है आपको भाई। बताऊंगा। हाँ,
کیونکہ ایک سیکورٹی ریجن ہے، دوسرا کہ کوئی ڈیٹا نہ کاپی کر پائے آپ کوئی نہیں نہیں RDP لے کے. ہاں. نہیں نہیں وہ بات نہیں ہے، میں مطلب وہ clear کرتا ہوں. ہاں، اصل 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 میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں نا، اگر RDP سیکورٹی ہے تو اچھا ہے نا. نہیں نہیں، سیکورٹی کی بات یہاں پہ نہیں ہے. اور 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 یہاں پہ فار ایگزامپل اس کے کافی سارے اسپیکٹس ہیں. میں آپ کو یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں. فار ایگزامپل اگر آپ کو یہاں RDP مطلب نہیں ہوتی ہے نا، مطلب ویسے یہ جو سارے اسٹیپس ان یہ لوگوں نے تو پہن ڈیمو، رکھے ہیں. یہ تو جی جی لیب کے لیے ہیں. آپ یہ تو لیب کے لیے ریسٹریکیشن رکھ رکھا ہے. اگر آپ کبھی کوئی کمپنی انوائرمنٹ میں کام کریں گے تو سبسکرپشن لینا پڑے گا نا، وہاں پہ تو یہ سب ریسٹریکیشن رہے گا نہیں. لیکن میں آپ کو یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں. ابھی فار ایگزامپل اگر یہ لوگ مطلب یہ جو ان لوگوں نے بین لگائی ہے ان چیزوں پہ نا، اگر ہاں ہاں مطلب یہ سارے مطلب اگر ہم ایزیلی ایکسس کرتے تو یہ اچھا ہوتا. ہاں، میں وہی ہے کہ مطلب ہاں، فیچر کو ملتا، میں فیچروں تو کو ملتا کہ کیا جی چیزیں جی ہیں. جی یہ میں تو ریسٹریکیشن یہ تو پھر یہ ویمویئر تو میں تو بہت کام نہیں ٹائم کا کام کرتا. نہیں لگ رہے سر کہ ہے. آپ کرتے ہم ہیں. آپ کا لیکن کام کیا ہے اس ٹائم؟ جی آپ کیا کر رہے ہیں اس ٹائم؟ جی میں اس ٹائم کلاؤڈ ایڈوانس پہ. سائبر سیکورٹی پڑھ رہا ہوں. اچھا، ایڈوانس فائبر سیکورٹی پڑھ رہے ہیں بھائی. جی پڑھائیے جی اڑائیے ہم کو بھی ایڈوانس فائبر سیکورٹی تھوڑا سا. اس جی جی لیے کیوں نہیں یار. اس لیے یہ سیکورٹی کر رہا ہے. اب سمجھ آئی. نہیں نہیں، اصل اصل میں مطلب آپ ہم تو سیکورٹی پہلو دیکھتے ہیں نا کسی بھی چیز کا. ٹھیک ہے. ہاں، تبھی فائبر اور سیکورٹی. پھر بھی اب سیکورٹی میں کو سمجھتے نہیں ہے، یعنی آپ سیکورٹی پڑھتے ہر ہیں اس کے چیز میں باوجود بھی آپ سیکورٹی سیکورٹی بتا کو رہے نہیں ہیں. سمجھتے. جی یہ کیسا جی جی پوائنٹ؟ کیوں نہیں سمجھتا. تو پھر نہیں آپ نے کیوں غلط نہیں. کیوں کہا کہ سیکورٹی. نہیں نہیں غلط نہیں کہا کہ فار ایگزامپل آپ نے وہ AWS کا یوز کیے یا نہیں. کیا میں کافی بندوں کو، ہاں میں نے خود بھی اس پہ پریکٹس کی ہے. آپ اس سے ایزیلی مس یوز کر سکتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. یہ جو بھائی بتا رہا تھا کہ وہ ہے یہ ہے، آپ اس میں سے میلیشیس فائل اس میں اسٹور کر کے کسی اور فائل میں مطلب کوئی اور بندہ اس کو ایزیلی ایکسس کر کے ڈاؤن لوڈ کر کے تو ایزیلی بندہ ہیک ہو سکتا ہے. اور وہ مطلب پبلک آئی پی پہ رہتا ہے. تو پھر یہی پوائنٹ آئی کہ اس سے پہلے جب ریسٹرکشن نہیں تھی تو اس پر کیا وہاں سیکورٹی نہیں تھی، تو پھر اب سیکورٹی پر آ گئے نا. تو پھر پہلے سیکورٹی نہیں تھی. مجھے اس کا آنسر ذرا دینا، مجھے سمجھائے نا. میں سیکورٹی کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، آپ مجھے سمجھائیے. جی پہلے تو کوئی بھی چیز سیکیور نہیں ہوتا. فار ایگزامپل کوئی کمپنی بنتی ہے یا کوئی آرگنائزیشن بنتا ہے، اتنا سیکیور نہیں ہوتا. یعنی تھوڑی ویم ویئر سیکور دیر بعد، نہیں ہے. تھوڑی دیر بعد ان کو تھوڑا عقل آ جاتا ہے کہ یار یہاں سے بھی کچھ ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل آپ مطلب کوئی گھر بناتے ہیں نا، تو مطلب آپ کو خیال آ جاتا ہے کہ بعض دفعہ یا تو پہلے سے آپ نے ڈیزائن کرنا ہوتا ہے سیکیور ڈیزائن، لیکن بعد Reginald میں Moyo, کوئی کوئی دیوار. جی I جی want to include you in the discussion. You know, Hovo IT said that VMware is the company who don't know about the security and they realize, so نو they have make the restrictions. So is this a good point? I totally disagree. How VMware realized? It's mean they haven't expert of security. Reginald Moyo, over to you. نو نو سر، ہر ایک چیز میں مطلب جب آپ پہلی روز کو کرتے ہیں، پہلی مطلب فیس بک جو تھا وہ اتنا سیکیور نہیں تھا. نہیں نو ٹھیک سمجھ ہے. گئے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہاں ریئلائز ہو گئے، جی ابھی سیکیور ہو گئے. Reginald Moyo, جی respond to this. Alusa, yes, I think I disagree because, well, RDP is a very useful tool for network engineers. And یا I don't really know the reasons why they've taken the decision to restrict RDP as well. But yeah, I think I disagree. No. My point was that who IT told us in the panel that VMware is the big company who haven't a security expert and they have realized about the security. They have some security issues, so that's why they do the restrictions. So do you agree with this point? Yes, on that point, I do agree, sir. How you agree? Yeah? VMware is a big company. It's mean they haven't security expert and they have realized. So now they have do the restrictions.
This is not the valid point. Regional Mayo. Please repeat again, sir. My network was breaking. Regional Mayo, I mean that how you can say that I agree. Because VMware is the big company, they have security expert. How you can say that due to security they have done the restrictions because they have some security problem. This is not the good answer because they have security expert available. This is the big company. Well, I guess some exploits are very different, sir, and diverse again. So hence VMware has taken the stance to restrict that. But then I'm saying from our side as network engineers, RDP is a very useful tool. We would have loved it. It would have been kept that way. So that's the reason why I'm disagreeing. मोहम्मद इदरीस खान, आप बताइए आप किस इस बात पर आपका जहन मान रहा है कि VMware के पास सिक्योरिटी एक्सपर्ट नहीं है, उनका सर्वर हैक हो रहा था इसलिए इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई है। यार ये तो बात गलत है ना, वो आईटी ने जो की है। No, I think I doesn't agree with them. But in somewhere you need to update your security with time to time, and I think they are talking about this point. मोहशान, आप बताइए यार, इंडिया में छोटी छोटी कंपनी की भी सिक्योरिटी होती है, क्या VMware की सिक्योरिटी इससे पहले नहीं थी? सर हमारे यहाँ छोटी मोटी कंपनी है, हमने तो फायरवॉल लगा रखा है 1.5 लाख का। हाँ, उसका सब्सक्रिप्शन है पर ईयर है 1,15,000 का पर ईयर का सब्सक्रिप्शन है। हाँ, आप बताइए, फायरवॉल सिर्फ नेट एक्सेस होता है, वहाँ सर्वर भी नहीं रखा है, सिर्फ नेट के लिए, इंटरनेट एक्सेस के लिए भाई और आजकल एंटीवायरस के लिए। आजकल फायरवॉल का आप इजीली मतलब बाईपास कर सकते हैं आप यार ये मतलब क्या बात की है, ऐसा नहीं ये तो भाई बिल्कुल गलत फायरवॉल बात है यार। बाईपास हो फायरवॉल की तो कैसे कुछ बाईपास हो भी सकता है? बोल देंगे, हाउ फायरवॉल कैन बी फायरवॉल बाईपास यार? बाईपास कर देंगे आप। ये क्या कह रहे हिट हैं आते हैं यार? नहीं उस पे मुझे दिखते हैं। ये क्या कर रहे हैं नहीं यार? सोफोज, सर सोफोज भाई कंपनी का नाम सुना होगा, हाँ हाँ, वो कंपनी का फायरवॉल लगा है। ये क्या और कह रहे हैं जिस यार? कंपनी का भी सिक्योरिटी दी ओ ओ, आईटी, ये क्या कह रहे हैं आप तो ऐसी बात कर नहीं रहे हैं कि ना कहने की बात। सब नहीं कुछ बाईपास ही हो जाएगा तो बचेगा क्या फिर? One minute, regional Mayo, I have a question. Can firewall be bypassed? यस यस No, ऑफ from कोर्स regional Mayo. Yes, sir. What was the question? Can firewall can firewall can be hacked, like it can be bypassed or not? Yes, firewall can be bypassed also, sir. There's so many attacks that How yaar? an How? attacker can use to bypass. How To it is bypass. possible? everything is possible in secure cyber security. Yeah, especially in this IT No, industry, how? everything is possible. Motion, how it is possible? हाँ I वो don't तो है, understand. वो तो पॉसिबल है, लेकिन इतनी इजीली नहीं है। पॉसिबल सब कुछ है आज के टाइम पे। नहीं इम्पॉसिबल नहीं है मोहचान। हाउ इज इट पॉसिबल? फाइवर तो खुद एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है, तो आप उस पर कैसे हाँ अटैक कर डिवाइस सकते है, हैं? लेकिन अब इतनी जल्दी बाईपास करने के लिए नहीं होता सर, बाईपास कोई यानी फायरवॉल नहीं कोई नहीं लगाना सकता चाहिए, बाई। वो आईटी का मतलब ये फायरवॉल नहीं लगाना चाहिए, ये बिट डिवाइस है, इसका मतलब तो यही निकलता है। पर अब मैं केस कर दूंगा फोफोज वालों के ऊपर अगर बाईपास हो गया तो। हाँ ना, वो आईटी हमें बताइए आपने क्या हाँ पॉइंट उठाया हाँ है? जी 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 मैं आप अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के बारे में बताऊं, वो ब्लैक हेल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का सीयू है, ठीक है। अगर मतलब उसका आप सुन लेना तो आपको काफी समझ में आएगा कि मतलब किस तरह बाईपास हो है। ठीक है, अभी तो मैं नहीं समझा सकता कि किस तरह बाईपास हो सकते हैं, लेकिन इजीली फायरवॉल ट्रिक किया जा सकता है, ठीक है। यार कैसे जहन मतलब नहीं मान रहा, बिल्कुल नहीं मान रहा। यानी इतनी बड़ी कंपनी हाँ, की फायरवॉल कैसे इजीली है? नहीं ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल से समझाऊं। फॉर एग्जांपल ये जो इंटरनेट है ना, इसमें तो पैकेट्स चलते हैं, हाँ ठीक है। मतलब डेटा तो मतलब पैकेट फॉर्म में मतलब वो करता है ना, कम्युनिकेट। हाँ डेटा पैकेट फॉर्म में हाँ आता है। जी जी जी। तो मतलब पैकेट को हम मतलब उसके उससे छेड़छाड़ करके कुछ कर सकते हैं, ठीक कैसे है। कैसे? एक मिसाल में आपको बताऊं, वो तो काफी हो जाएगी, लेकिन खैर हो जाए। आप कर सकते हैं जी जी फायरवॉल जानते हो, जब आता है, जब कोई भी जी डेटा जी भेजते हो तो फायरवॉल
मैं फ्लो हो जानता गया हूँ आपके सिस्टम पे आता है, हाँ हाँ नहीं वो मैं ब्लॉक इसने कर मैं देता है, वहीं पे इसने ब्लॉक ओ सिक्योरिटी कर देता डिवाइस है। को भी गलत कह दिया यार। जी जी, फायरवॉल जो है, फायरवॉल जो है पैकेट को फिल्टर करता है ना, मैलिशियस हाँ हाँ, सॉरी मैलिशियस को पैकेट को, फिल्टर ठीक करते है। हैं। जी जी, लेकिन ये इजीली बाईपास हो सकता है, ठीक है। मैं कैसे अपने आप से कैसे? नहीं बता रहा, मैं अपने आप से नहीं बता रहा, मतलब आप किसी, ठीक है, किसी और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट से पूछ नहीं ले नहीं, या स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग दलाइल देना इसे, गूगल कर ले, इसके पीछे दलाइल या तो गूगल देना। कर ले। नहीं नहीं, आपने कहा है, आप दलाइल देना, आपने किस बेस पर कहा है? यार आप अभी गूगल कर ले अभी सर, क्या? तो आपको पता आएगा, पता चलेगा कि मतलब किस तरह बाईपास क्या कर गूगल सकते करूँ हैं। बताइए? यस यस, यही क्वेश्चन, कैन फायरवॉल बी बाईपास्ड। यस, ये वाला क्वेश्चन। ये सुने, नजर आ गया जब, अब बताइए। तो भैया पूरा देख ले। यानी ये पहला लाइन जो है ना, टॉप लाइन, वो गलत है। नहीं पूरी ले, हाँ ये पूरे। क्या कह रहा है आगे भी कुछ। हाँ हाँ, जी जी, ये ये जो दूसरा क्वेश्चन है वो वाला ओपन कर ले। अब ये आप नीचे मत आए ना। नहीं नहीं, आपको जवाब मिल जाएगा। मतलब ये जो, मतलब ऊपर अक्सर ये जो यहाँ जो पर लोग भी है कि, फायरवॉल करने यहाँ वाले, पर जी भी है कि नहीं हो जी, सकता फाइवर कैन नॉट बी बाईपास। ये पढ़िए जरा। नहीं, we are not allowed to access certain port services website as they are may be blocked by the firewall। हाँ फाइवर खुद ही ब्लॉक वो कर देता है। आप कैसे फाइवर हाँ को वो ब्लॉक कर सकते हैं? वो तो ठीक है, ब्लॉक करते हैं, लेकिन फायरवॉल बाईपास हो सकता है, ये तो हर कोई मानता है। नो, आप कैसे मानते हैं? कोई भी पैनल में नहीं नहीं, मानता, सिर्फ आप मानते हो और आपके पास दलाइल नहीं है। दलाइल देना। आपने कहा गूगल का, है गूगल ने दलाल, भी बताया, गूगल ने भी बताया कि आपकी बात गलत है। नहीं वो नीचे नो और भी आप ढूंढ ले, आपको मिलेगा नहीं नहीं जवाब। बताए ना आप, ऐसा नहीं है बताए ये। बताए, कहाँ पर जाऊँ बताए? यहाँ पे हाउ कैन वी क्रैक अ फायरवॉल, ऊपर ऊपर जो क्वेश्चन था देखो वो यहाँ वाला पर, ओपन कर ले। कहाँ ये? यस, या हाउ डू हैकर बाईपास अ फायरवॉल, ये वाला भी ओपन कर ले। ये देख, नो मैटर हाउ सिक्योर अ फायरवॉल इफ द हाँ मैंने, ऑपरेटिंग सिस्टम और no matter एप्लीकेशन। how security यस secure a यस firewall is, if the operating system or यस applications is protecting his vulnerabilities, it may be easy for यस hacker to bypass it. For instance, there are many exploits in Windows that can be utilized by attackers. यस यस, हाँ ये मान रहे या नहीं। अब इस पर मुझे समझाइए जरा। ये कह रहे हैं ना कि फॉर एग्जांपल फायरवॉल जितना भी सिक्योर हो, ठीक है, या ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन जो भी हो उसमें वल्नरेबिलिटीज हो, तो इजीली हैकर उसको बाईपास कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी फायरवॉल तो लगा होता है, लेकिन अगर वल्नरेबिलिटी हो तो फायरवॉल को बाईपास किया जा सकता है, नहीं ये नहीं, कह रहा है। ये अगर गूगल ने भी कहा है तो इससे मैं टोटली डिसएग्री करता हूँ। वजह क्या है? वजह ये है, आप जरा इसे देखिए, गूगल ने क्या कहा है। गूगल ने कहा है कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है, कोई कोई यानी एक हार्डवेयर या उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम उसके ऊपर है, सही है ना? और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने लगा हुआ है फायरवॉल। फॉर एग्जांपल रफ डायग्राम बना रहा हूँ, सही ना? रफ, ये हमारे पास है फायरवॉल, वैसे रफ डायग्राम है, सही ना? तो मुझे बताइए, वो कह रहे हैं गूगल कि अगर इनमें एप्लीकेशन में वल्नरेबिलिटी हुई तो फायरवॉल इजीली बाईपास हो सकता है। ये बात तो गलत है। क्यों? क्योंकि फायरवॉल तो जब आप रिक्वेस्ट भेजते हैं ना एक ऐप पर, यानी उसमें वल्नरेबिलिटी है, आप फायरवॉल के अंदर आते हैं तो फायरवॉल आपको चेक करता है, आपको आ नहीं देता। उसने कहा ना पहले कि आपको ये पढ़े ज़रा यहाँ पर, ये क्या लिखा हुआ है कि we are not allowed to access certain port services websites if they are may be blocked for firewall। firewall क्या करता है? वो उसे ब्लॉक करता है। जब ब्लॉक करता है तो वो उसे अलाउ नहीं करता, तो vulnerability तो बाद में आती है ना, पहले तो firewall आता है। firewall को उसे फेस करना पड़ेगा। firewall तो खुद एक सिक्योरिटी डिवाइस है, वो तो इसे सिक्योर करता है, उसके कुछ रूल्स होते हैं। तो अब बताइए ये बात। हाँ, मैं आपको एक और बात समझाऊं। अब बताइए।
وہ یہ بات تو یہ غلط جو ہے، یہ تو غلط بات ہے. وینڈ نہیں غلط نہیں ہے، یہ بالکل کریکٹ ہے. میں کیسے؟ آپ کو ایک فار ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں. ہاں فار ایگزامپل میں نے وی بی اسکرپٹ میں ایک اسکرپٹ بنایا، ٹھیک ہے. اسی اسکرپٹ میں یہ ہو رہا تھا کہ مطلب اسی اسکرپٹ کو رن کر کے وہ ونڈوز کو ریسٹارٹ کر کے اور اس کا جو پاسورڈ ہے وہ بھی چینج کرتا تھا، ٹھیک ہے. صحیح ہے. ہاں، اور وہ ونڈو 11 میں اپنا بلٹ ان فائر وال بھی لگایا نا، اس میں بھی لگا لگایا ہے، نہیں؟ ونڈو 10 میں بھی لگا ہے. جی جی، لیکن ونڈو 11 لیٹسٹ ہے. ہاں تو پتہ ہے. مطلب آپ اسی اسکرپٹ کو رن کر کے دوبارہ مطلب وہ فائر وال کیوں ڈیٹیکٹ نہیں کر رہا؟ جب میں اس کو رن کرتا ہوں اور کمپیوٹر خود بخود ریسٹارٹ ہوتا ہے اور پاسورڈ بھی چینج ہوتی ہے، تو فائر وال کہاں مر گیا پھر؟ نہیں نہیں نہیں، یہ بات آپ غلط آپ کہہ رہے ہیں. یہ جو ہے نا، نہیں یہ بات بیسیکلی یہاں پر یہ ہے کہ یہ ونڈو کی پھر سیکورٹی ایشو ہوگی، ان کی کمزوری ہوگی، انہیں چاہیے تھا. یہ آپ نے پھر ون سسٹم پہ کیا ہے، آپ نے باہر سے سسٹم کو ایکسس کر کے نہیں کیا ہاں ہے. یہی میں بتا رہا ہوں موشانو، میں یہی پوائنٹ بتا رہا ہوں. پین میں ڈائگرام اس لیے بنایا یہ دیکھیے کہ آپ نے کہ آپ دیکھو کو میں یہاں سے یہاں گزرنا بیٹھا ہوں، پڑے یہاں گا، پہ میں میری گزرنا کمپنی پڑے گا یہاں سے. فائر وال سے گزرنا پڑے گا. وہ نہیں، فائر فائر وال وال سے ایک گزرنا ڈیوائس پڑے گا، آتی ہے. لیکن فائر وال سے چھیڑخانی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ مطلب اس کو دھوکہ دے اچھا، سکتے میں ہیں. کل پھر آپ کال کریے گا مجھے، تو میں آپ کو اپنا فائر وال دکھاتا ہوں ٹھیک ہے پروپوز انشاءاللہ. کا. کس آپ ٹائم؟ اپنا وہ کس ٹائم کال کریں؟ جی جب بھی کرنا ہے کریے، کل 11-12 بجے کریے. میں آپ کو اینی ڈیسک پہ آپ کو شام 11، دیتا ہوں، دیکھیے فائر وال. شام 11، رات کو 11 بجے اس کا. شام 11 نہیں، مارننگ میں آپ کب فری ہوتے ہیں؟ مارننگ میں تو ہمارے کلاسز ہوتے ہیں نا. کتنے بجے تک رہتی ہے آپ کی کلاسز؟ وہ تو 2 بجے تک رہتے ہیں. ہاں تو 2 بجے کے بعد کال کر لیجیے گا ہمیں. صحیح ہے، ہم کنیکٹ ہو جائیں گے. میں گروپ میں سینڈ کروں گا تو وہ آئی ٹی پہ آ جائے گا. صحیح ہے، وہ آئی ٹی آپ کو ٹھیک. پتہ ہے کہ آج کا یہ پیپر لگ رہا ہے پر ایسا ہی نکل جائے گا، کچھ نہیں پڑھیں گے نہیں، لکھیں گے نہیں. یہ بات یاد رکھیے کہ وہ آئی ٹی کہ آپ نے جو بھی کہا ہے نا، یہ تو میں جو ٹوٹلی یار ڈس ایگری کرتا ہوں. آپ نے بات ایسی کی جیسے یعنی جو سسٹم کی فائر ہے اور سافٹ ویئر فائر آپ اس کی بات کریں. میں بات کر رہا ہوں نیٹ ورک سیکورٹی فائر جو ڈیوائس ہوتا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. اس سے آپ نہیں کر جی سکتے بائی پاس. آپ جس کو کر رہے ہیں وہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ ونڈو کی جو ہے نا اس میں کچھ ولنریبلٹی ہوگی، تو انہیں چاہیے کہ وہ اسے ریزولو کرے. تو یہ تو الگ بات ہے نا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ نیٹ ورک سیکورٹی فائر فورس فورٹینیٹر یار، یہ ایسے بڑے فائر ہے، یہ ناممکن ہے انہیں کرنا، کریک کرنا. یہ تو اتنی بڑی کمپنی ہے یار، سر. آپ کیسے کریں؟ پالو الٹو کو آپ کیسے کر سکتے ہیں یار؟ سسکو ایسے کو آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اٹ از ناٹ پاسبل یار. سر ایسے فائر وال کو مطلب لوگ بائی پاس کرتے ہیں، لیکن مطلب وہ والا بندہ نہیں جو مطلب صرف اس نے صرف واٹ از سائبر سیکورٹی پڑھاؤ. میں جو بھی ہو نہیں کر سکتا یار، جو بھی ہو جو بھی ہو. جی جی کر سکتے ہیں، کیوں نہیں. صحیح ہے. مجھے ایک بات بتائیے، آنسر دیجیے، آنسر دیجیے. جی جی اگر ریجنال ما listen this. If there is a big hacker in all over the world, for example, he is a top hacker, okay, and he want to crack the firewall, which is from Palo Alto, for example. So in Palo Alto, there are many security experts, and this is deployed in the many companies in all over the world. So if he can crack it, he can bypass that firewall. So it's mean that he can crack any company data. He can give disadvantage to any company in all over the world. So is it possible, Reginald Moro? Um, well, that's a very difficult question, but I think it is possible. No, it is not possible. How it is possible? Also, we shouldn't forget the idea of an in-house attacker. You know, we also get in-house attacks, and they have access already to the system, and they can exploit the system and use it for malicious things. Yes, yes, but I agree. But Palo Alto is a firewall which have many features. Okay, there is nothing that they haven't covered about this. So how you can crack? How a big top hacker can hack? Is it possible? Um,
A very difficult question, sir. No or yes? I had said yes. No, it is no. How yes? It is not possible because Palo Alto is the company which firewall is deployed in the many companies. So if you can correct that, you can bypass that. It means you can access any company data. You can access any bank data. How it is possible? Moichan will respond, please. Moichan, Mr. Moichan, Mohammad Idris Khan. Okay, Saad, I have not too much information about security, but I think it's too much difficult that you break the firewall. हो आईटी अब बताइए मोहम्मद इदरीस खान ने आपको बता दिया असल में बात ये है, फॉर एग्जांपल अगर आपको सिक्योरिटी का डीप अंडरस्टैंडिंग हो और आप मतलब फायरवॉल तो एक मामूली सी चीज है, मतलब मामूली सी सिक्योरिटी चीज़ यार अब ये नया आप सोचा चढ़ा हुआ है नहीं कि ये मामूली जी चीज़ है नहीं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट के सामने तो मामूली चीज है, क्योंकि यार फॉर एग्जांपल कैसे आप कैसे अगर आप बातें कर रहे हैं नहीं, ये जो फॉर एग्जांपल अगर आप कोई गाड़ी मैकेनिक के पास ले जाए ना, अगर वो एक्सपर्ट है तो आप मतलब जल्दी से उसमें पार्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। और उसमें कोई और भी फॉर एग्जांपल अगर चीज ऐड करनी हो तो इजीली आपको ऐड कर सकती है, ऐसी बात नहीं है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो होता है वो रियल मतलब इन चीजों को डीप में अंडरस्टैंड करता है। ऐसी बात नहीं है, जिस तरह ये सारी चीज़ों में वल्नरेबिलिटीज आती हैं, जो जितनी भी हैकर्स ग्रुप हैं वो काफ़ी मतलब सारे बैंक्स पे भी अटैक हो चुके हैं पास्ट में। जिस तरह के कुछ ग्रुप थे, मैंने मतलब उस पे रिसर्च किया था, 2-3 ग्रुप्स को मैंने स्टडी किया था और डीपली से, तो आप नहीं कर सकते तो हैं। मुझे तो ये आंसर भी फिर दीजिए ना साथ में वो आईटी के अगर कर सकते हैं पालो अल्टो को फॉर एग्जांपल तो उसको तो जी, बहुत जी। सारे कंपनीज ने डिप्लॉय किया इसका मतलब है आप सारे कंपनीज को क्रैक कर सकते हैं इसका तो यही असल मतलब है में असल में मैं मतलब अपने आप से नहीं बता रहा। ये जो और बंदा था ना, जो अभी आई थिंक क्या नाम है, अभी ऐड हो हुआ है, अफ्रीकन है आई थिंक। हाँ रीजनल वो मोयो जी जी, उसने भी सुना होगा, लेकिन असल में मैं एक बंदी का वो देख रहा था, एक कोर्स, तो उस वो बता रहा था कि मतलब वो, मैं आपको सोर्स भी उसका दिखाता हूँ, ब्लैक हिल्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। वो कह रहा था कि ऐसी ऐसी कंपनियां थी, मतलब जो जिन्होंने हमें चैलेंज दिया था, लेकिन बाद में हमने उसके फायरवॉल हैक किए, तो फिर तो फिर वो लोग मतलब फिर वो लोग उसको पता चला कि यार नहीं हम नहीं वो तो मैं जी एग्री जी करता हूँ मुकम्मल एग्री जी करता जी हूँ मुझे कोई एतराज़ जी नहीं है मुझे ये बताइए सिर्फ कि अगर पालो अल्टो डिप्लॉय हुआ है सारी कंपनीज में फॉर एग्जांपल ऑल ओवर द वर्ल्ड तो अगर वो आप कर सकते हैं तो इसको मतलब है आप सारे कंपनीज का डेटा चुरा सकते हैं आप सारे बैंक इन्फॉर्मेशन यही मतलब निकलता है यहाँ पर जी, जी, बिल्कुल, ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटी का आपको पता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो हैकर्स हैं, असल में वो ऐसी वल्नरेबिलिटी होती है जो फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को भी पता नहीं होता, ठीक है? हैकर्स उसका फ़ायदा उठाते हैं, अक्सर जो डार्क वेब है, वो लोग उस पे सेल्स भी करते हैं वो वल्नरेबिलिटी को, और फिर उससे पैसे कमाते हैं। और कुछ ऐसे बंदे होते हैं, ग्रुप होता है जो उसको यूज़ करके उससे फ़ायदा उठाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बैंक में वो इंट्रूड करना है या जो भी करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब, लेकिन हर कोई रिस्क भी नहीं लेता। हाँ, फायरवॉल को वो बाईपास भी करता है, लेकिन सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए व्हाइट हैट जो होते हैं। लेकिन ब्लैक हैट जो होते हैं वो तो वल्नरेबिलिटी को सेल भी करते हैं, और खुद भी अगर मौका मिलता है उनको, फिर वो इंट्रूड करते हैं। यार तो फिर तो कंपनीज को चाहिए कि फायरवॉल ना लगाए ना नहीं, मुख्तलिफ कंपनियों की फायरवॉल है ना। फॉर एग्जांपल आप किसी दुकानदार से कोई चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, तो वो तो ये नहीं बताएगा कि इसमें ये ख़ामी है। असल बात तो ये है ना सर।
نہیں نہیں پھر بھی مجھے بتائیں کہ فائر وال تو نہیں لگانا چاہیے نا، نتیجے تو یہی نکلتا ہے. بھائی جب کوئی بھی کمپنی فائر وال بیچتی ہے تو آر این ڈی کر کے بیچتی ہے، ایسا نہیں کہ ہاں بنا آر این ڈی کیے بیچ دیا. فوفوس کا نام سنا ہوگا سر، آپ نے سنا ہوگا ہاں میں نے فوفوس سوفوس کا کمپنی کا نام نام. سنا ہے، سوفوس. نہیں، ہر کوئی نہیں کر سکتا، ایسا آسان بھی نہیں ہے، لیکن وہ جو سیکورٹی ایکسپرٹس بندے ہوتے ہیں وہ ایزیلی وہ کر سکتے ہیں. وہ ٹھیک ٹھیک ہے ہے. ہوتا ہوگا. اب ہاں کیا ہے جی، کرنا آپ تو. مطلب میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو صرف ٹو تھری ٹائپ آف ہیکرس، وہ مطلب آپ وہ ڈیفینیشن ان لوگوں نے سنی ہوتی ہے، ہاں ہاں. میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہاں ویسے میں لیکن آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ جی ایک الگ بات، ایک منٹ سنو، ایک منٹ. ایسا ہوا تھا کہ ہمارا جو کالج ہے نا اس میں 4,000 پلس اسٹوڈنٹس ہیں، یونیورسٹی ہے. تو ایسا کام ہوا ابھی ایک ہفتے سے کم ٹائم ہوا ہے، مجھے آفر ہوئی کہ آپ سارے نوشہرہ میں ایسے بندے ہیں جنہوں نے اتنے سارے کورسز کیے ہوئے، اتنے آپ اپڈیٹ کر دیں. میں آپ کو صحیح نا آپ کے پاس بہت نالج ہے، تو جتنے کورس آپ نے کیے نا تو سارے نوشہرہ میں اتنے کسی نے نہیں کیے، یعنی جس طرح آپ کے پاس نالج ہے. تو یہ واقعی ہے کسی نے یہاں پر کسی نے بھی 2-3 بندوں نے سارے ضلع میں کیا ہوگا، سارے ڈسٹرکٹ میں. تو یہ یعنی ہمارے ضلع جو ہے نا یہ بہت غریب علاقہ ہے، یہاں پر کسی نے یہ کورسز وغیرہ نہیں کیے، یہی وجہ ہے. تو یہاں پر کمپٹیشن کے لیے جو ہے نا ہماری یونیورسٹی سے 3 لوگوں کا ٹیم بننا تھا. اسلام آباد میں کمپٹیشن تھا، اس میں 30 ملین کے کتنے انعام تھا مجھے پتہ نہیں ہے. تو وہ ہیکر کا کمپٹیشن تھا. تو مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہو. میں نے صاف جواب دیا کہ نہیں، میں نہیں ہوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں جتنا بھی ایکسپرٹ ہو جاؤں نا تو مجھے ہیکر کا ڈیفینیشن بھی نہیں آتا. میں نے ہیکنگ کورس کبھی ٹچ نہیں کیا، نہ شوق ہے نہ کیا ہے. تو میں کیسے جا سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں آپ نوشہر میں ٹاپ پر ہے، آپ کو اتنی چیز ہوتی ہے، پھر آپ اپنے دوستوں کو بھی ڈھونڈیں. میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میں تو بالکل بھی جوائن نہیں کروں گا، کیونکہ اگر ایک چیز مجھے نہیں آتی ہاؤ آئی کین گو. کیونکہ پاکستان میں پنجاب سائڈ پر اتنے زیادہ ہمارے پاس ایکسپرٹس ہوں گے تو میں ان کا مقابلہ کیسے کروں گا؟ میں تو ان کے سامنے زیرو ہوں. پھر وہ تو ایکسپرٹ ہوں گے اس فیلڈ میں، مجھے تو ہیکر کا ڈیفینیشن بھی نہیں آتا. تو ہوا آئی ٹی اور موہد شانو محمد ادریس، آپ کے خیال میں میرا ڈیسیشن کیسا تھا، اچھا ہے یا برا؟ نہیں ٹھیک ہے، جس چیز میں ہمیں نالج ذرا سے بھی نہیں ہے تو ہم کیوں اس فیلڈ میں پوچھ جائیں. ہوا آئی ٹی آپ اور بتائیں وہاں میرا پہ فیصلہ ایکسپرٹ کیسا ہے. تھا؟ جی سر، ابھی ابھی میں اپنا اسٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اصل میں یہاں پہ ایک ٹریننگ سٹارٹ ہوا تھا نا گورنمنٹ کی طرف سے، ایم او آئی ٹی ٹی کی طرف سے، منسٹری آف آئی ٹی، ایڈوانس سائبر سیکورٹی کا. ہاں ٹھیک ہاں ہے. اور وہاں پہ وہ لوگ اپلائی کر سکتے تھے جو مطلب یونیورسٹی میں پڑھاتے ہو، اور وہ لوگ اپلائی کر سکتے تھے جو پروفیشنل ہو اور ان کے پاس 5-6 سال کا ایکسپیرئنس ہونا، وہ ہاں لوگ اپلائی کر سکتے تھے. ہاں تو میں نے بھی اپلائی کر دی. ٹھیک ہے. ویسے سیکورٹی کا مجھے جنون حد تک شوق ہے. ٹھیک ہے. تو اصل میں نے اپلائی کی، پھر مطلب تقریباً 25 بندے وہ سلیکٹ کرتے تھے. ہاں تو ان میں آلریڈی 3 جو تھے وہ یونیورسٹی کے پروفیسرس تھے، اور 10 میں سے میری سلیکشن ہونی تھی، اور میرے پاس وہ اتنا ایکسپیرینس وغیرہ بھی نہیں تھا، ہاں لیکن میں نے اپلائی کر دیا. تو مطلب پھر ایسا ہوا کہ میں نے ٹیسٹ میں 50 میں سے 49 مارکس لیے، اور الحمدللہ میرے پاس بھی کافی سارے سرٹیفکیشنز، اور جو بھی میں نے فری میں دیکھا ہے وہ اس کو میں نے اٹینڈ کیے. تو وہ لوگ اس لوگوں نے میرا سی وی دیکھا، اور پھر انٹرویو میں مارکس بھی اچھے تھے، جی پی اے بھی اچھا تھا، تو مجھے سلیکشن مل گئی. تو ہمت نہیں ہارنا چاہیے جو بھی ہو، لیکن آپ کے پاس نالج ہو لیکن یا آپ کے انٹرسٹ پاس نالج، نہیں نہیں آپ کے پاس نالج تھی نا اس چیز کی. ہو. جی جی، میں صرف یہ مطلب کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا انٹرسٹ اس میں نہیں ہے، نالج ہاں آپ کا نہیں ہے، پھر تو انٹرسٹ آپ نے ہے ایسا نا. ڈیسیژن لیا. تو جی ہم جی لوگ کا وہ جی جی کوڈ فیلڈ ہی نہیں ہے نا. ہم لوگ ایز اے نیٹورک انجینئر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، نیٹورک جی ڈپلومنٹ کرنے کی سوچتے ہیں، نیٹورک میں جی کیا جی کیا چیزیں بالکل. پینلمنٹ کر میرا سکتے ہیں. فیصلہ کیسا تھا؟ ہو آئی ٹی. جی جی، بہت اچھا تھا. مطلب فار ایگزامپل آپ نیٹ ورک کی طرف آپ کا جھکاؤ ہے نا. ویسے نیٹ ورک میں نے بھی پڑھا ہے، لیکن سائبر سیکورٹی میں بھی نیٹ ورک کی کافی اہمیت ہے. ہاں ضروری ہے، اگر آپ کو ضروری ضروری. نیٹ ورکنگ نہیں آتا ہو، یہ پروگرامنگ نہیں دیکھیے، آتا ہو، آپریٹنگ سسٹم کے بارے میں نالج نہ یہ ہو، جو دیکھیے سرور کے بارے میں 2 نالج نہ ہفتے ہو، تو پہلے آپ نہیں ہمارا کر بیچ 5 شروع ہوا ہے سی سی این اے سی سی این پی. یہ اسٹوڈنٹس سکتے. ہے، جی یہ جی ان کے پرفارمنس سے آپ دیکھ سکتے ہیں. دیکھیے ہر ایک اسٹوڈنٹ کا پرفارمنس ہے آپ کے سامنے.
ये देखिए मैं कुछ आपको दिखाऊँ क्या? ये देखिए, तो ये उनका परफॉर्मेंस है, 2 हफ्ते का काम है, इतने लेक्चर्स हुए 2 हफ्ते में, इतना ज़्यादा काम हमने किया है, 12 घंटे प्लस काम हमने 2 हफ्ते में किया है। ये हफ्ते के 3 दिन होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 9 पीएम टू 11 पीएम। ये देखिए उसके लेक्चर है, 6 लेक्चर हो चुके हैं, ये देखिए 2 घंटे 2 मिनट इस तरह। लेक्चर नंबर 2। जी जी, तो मैंने भी नेटवर्क बेसिकली का ये सीसी नहीं आई थिंक। सीसीएनपी कोर्स है ना बेसिकली। तो मसला ये है कि जी बेस 5 है ये। तो नेटवर्क में जो है ना, अगर आपको नहीं आती तो आप सिक्योरिटी में नहीं जा सकते, ये बात ज़हन में याद रखें। हाँ, ये बात है। सर्वर, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, प्रोग्रामिंग, ये एडवांस लेवल पे काम आती है। और अगर आपको ये चीज़ें आती है अच्छी तरह तो आप इजीली एक्सेल कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो बेसिक है सब चीज़ों में कवर है, और अभी एडवांस की तरफ जा रहा हूँ। और अभी 2 हफ्ते की क्लासेस हमने लिए, टीचर भी अच्छा मिला है। और काफ़ी मतलब आप कहाँ रहते हैं? जी, अभी तो इस्लामाबाद में हूँ। लेकिन मैंने पेशावर में भी वो 6 मंथ का साइबर सिक्योरिटी कोर्स किया था, और लाहौर से सीएच किया था। मतलब साइबर सिक्योरिटी में काफ़ी नॉलेज है वैसे। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है अभी, ये चीज़ें मैंने नहीं पढ़ी है, क्योंकि ये और एडवांस टॉपिक है। क्योंकि ये तो मिनिस्ट्री की तरफ से, और कोर्स कंटेंट्स भी अच्छे पढ़ा रहे हैं ये लोग। आप कोर में पढ़ रहे हैं, इस्लामाबाद कोर में? नहीं, इस्लामाबाद मतलब वैसे टीचर तो इस्लामाबाद फॉरवर्ड का है, लेकिन उन लोगों ने ठीक कर लिया हुआ है। लेकिन कोर्स असल में मिनिस्ट्री की तरफ से है, क्या फ्री में नाम है। है टीचर का? माज हाँ हाँ, माज महमूद। नाम सुना है जी मैंने। जी जी जी। तो वो बेसिकली हमारा जो है ना तकरीबन बहुत सा डिस्कशन मौज शानू किस चीज़ पर हुआ आज? नहीं वैसे 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 ये अच्छी बात है, सही ना, कि हम थोड़ा टॉपिक से हट कर भी बात किया करें, क्योंकि सिक्योरिटी जो है ना वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, सही ना, यानी वो बहुत उसमें जाना भी चाहिए, सही ना। तो अच्छी बात है कि हम टू द पॉइंट बातें हर वक्त ना करें, क्योंकि कभी कभार जो है ना इस तरह हम डिस्कशन करते हैं तो उससे हमें बहुत नॉलेज आता है, तो वो उससे बढ़िया होता है। तो डिस्कशन भी कोई चीज़ होती है, सही ना, ये टाइम वेस्ट नहीं होता। तो ये बात याद रखें कि इसका मतलब ये नहीं ये कि हमने क्लास नहीं लिया, ये भी एक क्लास था, सही ना। डिस्कशन जो है ना ये लेसन से काफ़ी हद तक अच्छी भी होती है, क्योंकि इसमें हमें बहुत सा नॉलेज एक दूसरे से मिलता है। तो ये बात याद रखें, सही ना, ज़रूरी नहीं है कि हम वो वाला करें, ये बहुत जी अच्छी जी चीज़ जी है। जी। वो IT आपके ख्याल में ये अच्छी चीज़ है ना? तो हाँ, बिल्कुल ठीक है। वैसे मैं आज घर से आया हूँ, और हॉस्टल कल क्लास है, 9 से लेकर 5 तक क्लास होती है। तो असल में डिस्कशन तो अच्छी बात है, मैंने भी इसलिए ज्वाइन किया। और VMware स्फीयर के बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं है। लेकिन हाँ, सुना था वो जो आई थिंक क्या नाम है उसका, सरकाशिफ। मैं उसको जानता हूँ जो सरकाशिफ। काशिफ हूँ। और वो जी जी जी, वो VMware स्फीयर वो पढ़ाता था आई थिंक। किसी बंदे ने मुझे दिखाया था कि ये काफी अच्छा पढ़ाता है। मैंने वैसे उसकी एक ट्यूटोरियल भी देखी थी, लेकिन अभी मैं सिक्योरिटी पे लगा हूँ। और नेटवर्किंग की भी अल्हम्दुलिल्लाह नॉलेज है मेरे पास, क्योंकि सीसीएनए किए मैंने हुए अपने? HCI किया सीसीएनए किए लाहौर हुए? से सीखा। जी जी, नहीं, HCI हुआवे का HCI किए, और लाहौर से CCNA मैंने किया था। लेकिन सर्टिफिकेशन नहीं की थी, लेकिन ट्रेनिंग फ्री में ली थी वो लाहौर से मैंने। सीसीएनपी किया है आपने? नहीं, CCNP नहीं की है, CCNA की ट्रेनिंग ली है। और HCI मैंने वहाँ से की है, हमारी यूनिवर्सिटी में फ्री मिल रही थी। ये और हमारा बेसिकली हमारा उस वक्त सेशन हो रहा था तकरीबन 1 महीने पहले, तो ये मैंने स्टूडेंट्स को कंडक्ट किया था ये सेशन। ये फुल कोर्स है, सही है, आप देख सकते हैं। ये देखिए कितने घंटे का है। जी, 6 घंटे का है। ये BGP फुल कोर्स है, जानते हो इसे? जी, आई थिंक CCNA तो मैंने जो पढ़ा है, रेप OSPF और ये चीज़ें मैंने पढ़ी है। वो तो CCNA है ना, ये CCNP का टॉपिक है, जी जी, CCI लेवल नहीं का नहीं है। नहीं नहीं, CCNP मैंने नहीं पढ़ा है। और वैसे कोर्स मेरे पढ़ा है, वो जो टीचर था उसने मुझे दिया था, वो लाहौर ये कॉर्बेट का। देखिए, ये देखिए, जी ये जो है ना ये हमारा CCNP 2 हफ्ते पहले स्टार्ट हुआ है, सही ना। अभी अभी 6 लेक्चर हुए हैं जी। ये कोर्स। ये कौन पढ़ा रहा है CCNA ये मैं पढ़ा रहा CCNP? हूँ ना, ये देखिए। ठीक ठीक।
تو یہ کورس بھی میں نے پڑھایا ہوا ہے لوگوں کو، آپ دیکھ سکتے ہیں. خیر میں آپ کو تھوڑا تھوڑا دکھاؤں گا. دیکھیے اس میں 10+ پروجیکٹس ہیں، 10+ لیئر ہے اس میں. جی ویسے آپ کا ارادہ ہے سی سی این پی کرنے کا؟ کیونکہ سائبر ہاں سیکورٹی ارادہ کے تو لیے تو ہے. سائبر جی سیکورٹی جی کے لیے جی تو وہ ضروری ہے، کیونکہ آپ کو ایڈوانس نیٹ ورک نہیں آتی تو پھر آپ کو مسئلہ ہوگا. جی سی سی این پی کا بھی ارادہ ہے انشاءاللہ، وہ بھی سرٹیفکیشن کروں گا، اور سی سی این اے کا اور سی سی این پی کا دونوں کا، کیونکہ سی سی این اے کا مجھے نالج ہے ویسے، اور صرف سرٹیفکیشن باقی ہے، وہ بھی کر لوں گا اور ریوائز بھی کر لوں گا. وہ جو حسنین صاحب ہیں اور ہارون ملک ہیں، وہ جو لاہور کورنر میں پڑھاتے ہیں نا، ان ہارون کی ملک تو ٹریننگ. ہارون ملک جی تو جی ہمارے پاس ہے نا گروپ میں، آپ دیکھ سکتے ہیں. جی بالکل. یہ دیکھیے ہارون ملک ہمارے پاس گروپ میں موجود ہے. یہ ہے. جی جی ہاں، ان کے سارے ویڈیوز میرے پاس پڑی ہے، اور سی سی این اے اور سی سی این پی کی. ہاں تو بیسیکلی آپ کا ارادہ ارادہ تو ہے. سی این پی آپ کب کریں گے اور کہاں سے؟ انشاءاللہ یہ ویسے میں رولپنڈی گورنمنٹ کے قریب رہتا ہوں، ہاں اور شاید میں یہاں پہ وہ کر لوں، لیکن ابھی سیٹ تھوڑا مطلب نہیں ہوں نا، اور سائبر سیکورٹی کی کا بھی لمبی کلاس ہو رہی ہے، اس لیے جب سیٹ ہو جاؤں تو انشاءاللہ ارادہ تو ہے کہ میں کر لوں اور ہمارے کلاس کا دونوں. کیا ارادہ ہے؟ اس میں کس طرح ہوگے؟ ریگولر کیا نہیں ویسے آئے کریں؟ انشاءاللہ ریگولر آؤں گا. اس کی مطلب کلاس ٹائمنگ آپ وہ کو پتہ ہے ٹائم کہ نہیں؟ نہیں، میں نے آج جوائن کیا وہ گروپ میں، کسی گروپ میں میں نے لنک دیکھ لیا، تو میں نے سنا شاید VSphere کے بارے میں تھوڑا جان سکوں، اس لیے میں نے جوائن کیا. صحیح میں آپ کو سمجھایا تو تھوڑا. یہ دیکھیے یہ ہمارے انٹرویوز ہوئے ہیں اس میں، تو جس بندے نے انٹرویو دیا ہے نا، یعنی اتنے بندوں نے انٹرویو دیا ہے، کہاں پر ہے یہ 13 بندوں نے. تو جس نے انٹرویو دیا فار ایگزامپل اس کے 50 سے کم مارکس ہیں، تو اسے $300 کا 6 مہینے کا کورس ہے صرف ویسفیئر کا. اس کے ساتھ ہم فری میں MCSE کرا رہے ہیں، فری میں سیان انٹرنیشنل سرٹیفکیشن کرا رہے ہیں، اور فری میں AWS کلاؤڈ پریکٹیشن کرا رہے ہیں، اور فری میں ہم کروا رہے ہیں VSphere 8. تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو 50% سے کم مارکس آئے ہیں انٹرویو میں تو کیا ہوگا؟ تو پھر آپ کو آدھا فیس دینا پڑے گا $150. اگر آپ کی 50% سے زیادہ ہے تو آپ کو 100% ڈسکاؤنٹ آلسو مل جائے گا، جس کے تحت آپ کو $1 بھی نہیں ادا کرنا پڑے گی، اور آپ کو 7 انٹرنیشنل سرٹیفکیٹ ملے گی. مگر اگر آپ اس طرح نہیں آئے ہیں، یعنی فار ایگزامپل آپ اس طرح آئے ہیں، دیکھیے جیسے یہاں پر ایک گروپ ہے یہ والا، اس میں 92 بند ہے، صحیح نا، 13 بندوں نے انٹرویو دیے. تو اس میں جو 13 بندوں کے علاوہ بندہ کلاس میں آئے گا، جیسے یہاں پر ہمارے پاس پینل ہے، دیکھیے تو اس میں ایسا بندہ فار ایگزامپل آئے گا تو اسے 7 انٹرنیشنل سرٹیفکیشن نہیں ملے گی، مگر 6 مہینے کے سارے کورسز کی ایکسیس ملے گی، یعنی لیب کلاس وغیرہ. مگر 7 انٹرنیشنل سرٹیفکیشن اسے ملے گی، ایک سرٹیفکیشن 200 $. کی ہے. جو کیا ہوگا، جو ہمارے پاس رجسٹر ہوگا، یعنی انہوں نے انٹرویو دی ہو. تو اگر آپ انٹرویو دینا چاہ رہے تو مجھے بتائیے. جی جی میں دینا چاہتا ہوں. یہ تو کافی اچھی اپرچونیٹی ہے کہ مطلب انٹرنیشنل سرٹیفکیشن بھی فری میں مل رہی ہے. اور محمد ادریس آپ بھی، تو محمد ادریس کو میں آپ کیا مشورہ دیں گے؟ ہوا ہے ٹھیک؟ میں تیار ہوں. نہیں نہیں، محمد ادریس کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ اسے انٹرویو دینا چاہیے کہ نہیں؟ جی جی دینا چاہیے، اس کو بھی دینا چاہیے، اور یہ کافی اچھی اپرچونیٹی ہے، اس کو مس نہیں کرنا چاہیے. محمد ویسے ادریس، میں تیار ہوں جس ٹائم. محمد ادریس آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ انٹرویو کے لیے ریڈی ہیں؟ محمد ادریس، اور ویسفیئر کے بارے میں تھوڑا بتاؤ. آپ نے کہا ہے مجھے نہیں پتا. صحیح صحیح اوکے. جی جی آپ نے جی جی تھوڑا بتا رہے تھے اس کے بارے میں. یہ دیکھیے یہ ہوتا ہے آن پریمیسز سولوشن. فار ایگزامپل آپ کو 3 سسٹم چاہیے، تو آپ مارکیٹ میں جائیں گے، آپ 3 ہارڈ ویئر خریدیں گے، اس کو آپریٹنگ سسٹم، اس پر اپلیکیشن انسٹال کریں گے. اسے ہم کہتے ہیں آن پریمیسز. صحیح نا. اس کا یہ ڈس ایڈوانٹیج ہے، فار ایگزامپل جب یہ آپ 3 ہارڈ ویئر لیتے ہیں، صحیح نا، تو کیا ہوگا؟ آپ کا ہیٹ بھی پروڈیوس ہوگا، بجلی بھی زیادہ ضائع ہوگی،
और अगर इफ़ यू डोंट नीड वन हार्डवेयर, आपको एक हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इसका यूज़ आपने कर लिया, अब आपको ज़रूरत नहीं है, आपको ये दो का यूज़ करना है, तो क्या होगा, देन इट विल बी केप्ट एज इट इज विदाउट एनी यूज, तो फिर ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, आपने जो पैसे लगाए वो ऐसे ही चले जाएंगे और आपको काम पूरा हो जाएगा, मगर फिर आप यूज़ नहीं कर सकते, रिसोर्सेज पैसे ही ज़ाया हो जाएंगे। मगर जो विस्फीयर है, तो विस्फीयर का मतलब ये है, ये देखिए आपको नजर आ रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ विस्फीयर का क्या मतलब है। ईश्वर का मतलब है डेटा सेंटर वर्चुअलाइजेशन, जिसमें डेटा सेंटर में सर्वर पड़े होते हैं ना, तो हमने उसे वर्चुअलाइज जी करना है। तो VMware विश्व का मतलब है VMware कंपनी का नाम है, जो वर्चुअलाइजेशन की कंपनी है, तो वो डिफरेंट प्रोडक्ट पेश करती है वर्चुअलाइजेशन के लिए। वो डेटा सेंटर को वर्चुअलाइज करने के लिए ना, जिसमें सर्वर पड़े होते हैं, उसके लिए उसका प्रोडक्ट है विस्फीयर, यानी हमारे कोर्स का नाम यही है। इसमें हम डेटा सेंटर को वर्चुअलाइज करेंगे। ये कोर्स आप सीखेंगे 6 महीने बाद, तो उसको आपको फिर आएगा कि आप डेटा सेंटर को किस तरह वर्चुअलाइज करेंगे। VMware कहते हैं कि अगर आपने नेटवर्क को वर्चुअलाइज करना है, नेटवर्क को, तो आपने 60 पोर्टल सीखना है। अगर आपने स्टोरेज को करना है, आपने VCN सीखना है। अगर आपने डिस्ट्रो को करना है, आपको हॉरिज़ॉन सीखना है, सही है ना। तो बात ये है, वर्चुअलाइजेशन का यही फ़ायदा है। मैं आपको फ़ायदा सिखाता हूँ कि अगर आपको 5 मशीन चाहिए, तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप 5 हार्डवेयर खरीदेंगे, जैसे ऑन प्रेमिसेस में होता है, फिर वो बिजली होगा, हीट प्रोड्यूस करेगा, एनवायरमेंट इफेक्ट होगा, आपको नहीं चाहिए तो फिर पैसे चले गए, रिसोर्सेज पैसे यूज़ होंगे। ऐसा नहीं होगा। उसमें आप एक ही हार्डवेयर लेंगे, वो थोड़ा हीट प्रोड्यूस करेगा, थोड़ा बिजली कंज्यूम करेगा, उसमें आप ज़्यादा रिसोर्सेज डालेंगे, उसमें हाइपरवाइजर एक सॉफ्टवेयर है, वो इंस्टॉल करेंगे, वो क्या करेगा, वो वीएम को क्रिएट करेगा। वीएम क्रिएट करेगा, जितनी वीएम आप चाहे आप अनलिमिटेड क्रिएट कर सकते हैं, अनलिमिटेड। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे 5 चाहिए, मैं 5 बना के दे दूंगा, तो क्या होगा, मेरा बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो इसे हम कहते हैं वर्चुअलाइजेशन। तो ये सर्वर होता है, हार्डवेयर नहीं, वो फॉर एग्जाम्पल सर्वर हार्डवेयर है, तो हमने सर्वर को वर्चुअलाइज कर दिया ना, तो विस्फीयर को हम कहते हैं सर्वर वर्चुअलाइजेशन प्रोडक्ट। तो ये था विस्फीयर। अब आपका कोई क्वेश्चन हो तो मतलब पूछिए। ये एक ही हार्डवेयर पे मल्टीपल ओएस वीएम्स क्रिएट करते हैं, हाँ, यही इसका मतलब ये। यही मतलब है। हाँ, अब आपको समझ आ गई। जी जी। तो वर्चुअलाइजेशन आपको सीखना चाहिए कि नहीं, इसके बाद जवाब समझिए। हाँ जरूर सीखना चाहिए। अच्छी टेक्नोलॉजी है कि नहीं, वैसे मैं यहाँ बिल्कुल वो है। और फ्री ट्रेनिंग है। जी जी, ये तो मुझे चाहिए। कब इंटरव्यू देना है? जब आप रेडी हो। जी मैं अभी भी रेडी हूँ। सही, इस क्लास के बाद मैं आपसे लेता हूँ, सही। जी सर और इंशाल्लाह। एक बात याद रखिए कि एक मसला है यहाँ पर, कि आप जो है ना, आपने लेक्चर नहीं लिए हैं। हम हमारे बेसिकली कितने लेक्चर हुए, मैं आपको दिखा देता हूँ सही, ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखिए, सॉरी, ये है, आपसे कितने लेक्चर हुए हैं, देखिए। आपसे लेक्चर 4 हुआ है, 3 हुआ है, 2 हुआ है, 1 हुआ है। तो आपने 4 लेक्चर देखने हैं, आप मुझसे रब्ता कर रहे हैं ना, मैं आपको 4 लेक्चर के लिंक दे दूंगा, आपने ये देखने हैं, नोट्स बनाने हैं, मुझे सेंड करने हैं, असाइनमेंट करने हैं, मुझे सेंड करने हैं। इस तरह अगर आपने सही काम करने हैं, तो आपको फिर इंटरनेट सर्टिफिकेशन मिलेंगे। अगर आप गप लगाएंगे ना, सीरियस नहीं होगे, तो फिर आपको वो फैसिलिटी नहीं मिलेगी, ये बात याद रखें। दूसरी बात कि आज लेक्चर 5 है, इसका लिंक भी मैं आपको सेंड करूंगा, सही। समझ आ गई कि नहीं। जी सर इंशाल्लाह सर, आप तो आपसे लिंक जो सेंड करें लेक्चर और प्रीवियस सर। हुए हैं ना, अगर आप देख लेंगे, तो आपको फिर जी मुकम्मल समझ आ जाएगी, सही है ना। सर, वो मैं सर से सारे लेक्चर्स देखूंगा। सर आप ऐसा करें, अपना कांटेक्ट नंबर व्हाट्सएप का सर काइंडली दे दे, ये है तो ना, मैं नहीं आपसे नहीं, रब्ता करूँ। ये मेरा नंबर है ना, ये देखिए, मैंने आपको दिखा दिया है, ये मेरा नंबर है ना। कहाँ पर ये कैसे सर आएगा, ये तो किसी को आएगा, किसी को तरीका आता है कैसे आता है। आप इस ग्रुप में, इस पे क्लिक करें। सर वो जो सेटिंग है ना, ये जो 3 डॉट्स हैं लेफ्ट साइड पे, इस पे क्लिक करें, सेटिंग में जाएं, सेटिंग सेटिंग। हाँ प्रोफाइल में भी। जी जी सर, अभी मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, आपसे कांटेक्ट करूँगा। सही है। तो मोहम्मद इदरीस, रिस्पॉन्ड प्लीज, मोहम्मद इदरीस, मोहम्मद इदरीस, माइक ऑन म्यूट करें प्लीज, मोहम्मद इदरीस खान। सही है। तो बेसिकली हमारा सेशन जो है ना, वो 11 को ख़त्म होता है, ये 2 घंटे की क्लास होती है। तो ये था हमारा लास्ट सेशन इस वीक का, फर्स्ट वीक का। आज यानी फ्राइडे को ये कोर्स स्टार्ट हुआ था, बैच 1, सही है ना। तो बेसिकली बात ये है कि सर सर ये क्लास टाइमिंग कौन सी डेज में होती बताते है हो। मतलब? तो जी सर। ये लास्ट सेशन है इस वीक का। 4 छुट्टियाँ होगी आपकी हफ्ते में, और फ्राइडे सैटरडे संडे को 9 PM से 11 PM तक आप 2 घंटे देंगे,
اور سیکھیں گے. بات یہ ہے کہ آپ کی 4 دن کی چھٹی ہے. آج لاسٹ سیشن اس ویک کا فرائیڈے کو ایک کورس شروع ہوا تھا اور ملتے ہیں اگلے سیشن میں فرائیڈے کو. کمنگ فرائیڈے کو آپ 4 دن کی چھٹیاں انجوائے کریں اور کام وغیرہ کریں. اور آپ کو ایک سرپرائز دے ضرور کہ آپ کو آج اسائنمنٹ نہیں ملنے والے, یعنی آپ کو فرائیڈے کو اسائنمنٹ سبمٹ نہیں کرنا پڑے گا, آپ ایسی کلاس میں آ سکتے ہیں. اور فرائیڈے کو اسائنمنٹ کا ہم دیکھیں گے کیونکہ آج ہم نے ڈسکشن کی ہے اور ڈسکشن بہت اچھی چیز ہے, صحیح ہے نا. یہ نہیں سوچے کہ ہم نے ٹائم ویسٹ کیا ہے. یہ 2 گھنٹے میں ہم نے جو سیکھا ہے نا ایک دوسرے سے, تو ایسی بات تھی کہ مجھے نہیں پتا تھی, صحیح نا. ایسی بات تھی جو ان کو پتہ نہیں تھی, تو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر کے وہ سیکھی ہے, صحیح نا. تو یہ مت سمجھے کہ یہ ویسٹ ہو رہا تھا. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بس کیا کرنا ہے, آپ نے بس کام 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 کرنا ہے. کام کے علاوہ بھی کچھ دنیا میں ہوتا ہے, صحیح نا. تو اگر ہم صرف ایکچوائزیشن کو ٹھیک دیکھیں ہے گے سر, میں آپ سے کانٹیکٹ کروں گا, ٹھیک ہے سر. تو فرسٹ آف آل اور سیشن اینڈ کرنے سے پہلے ہمیں یہ بتائیے فیڈ بیک اس سیشن کا کیسے رہا. اچھا رہا, مطلب کافی مطلب لوگوں سے انٹریکشن کیا اور نئی چیزوں کے بارے میں جانا, تو یہ کافی بینیفیشل تھا میرے لیے. اب محمد ادریس کا نام بتائیے. محمد ادریس, وہ تو آئی پتہ تھنک نہیں وہ سوئے ہوئے ہیں. ہاں سویا ہوا ہے. تو چلیے جی سر. سیشن کو اینڈ کرتے ہیں, ملتے ہیں فرائیڈے کو. 4 دن کو چھٹیاں کیجیے اور فرائیڈے کو ملتے ہیں سیشن نمبر 4 میں. یہ لاسٹ سیشن تھا, سیشن 3 آف دس ویک, فرسٹ ویک. فرائیڈے کو یہ کورس اسٹارٹ ہوا تھا اور ملتے ہیں اگلے سیشن میں. اللہ حافظ.